नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? क्या हाल चाल गाइस? सो एंजॉय कर रहे हो इनाजुमा? भाई जी वेलकम, प्रिंस भाई वेलकम, कृष्णा भाई वेलकम, देबू भाई वेलकम। क्या हाल चाल है, कैसे हो? कैश पूरा दिन किया पर ख़त्म नहीं हुआ तो अच्छी बात है ना। कंटेंट ख़त्म नहीं हो रहा तो अच्छी बात है। लगेगा टाइम, इसको काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैंने तो इतना ज़्यादा करा भी नहीं यार, सच्ची कह रहा हूँ। जी आप बताओ, करूँ या फुल हैकर 50-50 या 72 विश अंडर हैंड? आई हैव काश ना जीतो। वेल, कहानी है ऐसी कि टीम है, हैकर के लिए टीम है। पहला पहला पॉइंट, टू एक्ट टू एपिक। मैंने खेला ही नहीं गेम ज़्यादा है। मैंने ज़्यादा गेम खेली नहीं है भाई। सो नो आइडिया, मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं अभी। थोड़े बहुत क्वेस्ट करे थे बस, वो अपलोड कर दिए थे। साइड क्वेस्ट कर रहा था, वो अपलोड किए बस, और कुछ नहीं। एक्ट टू स्टार्टिंग यूपी है, ओके। देख लेंगे, मेरे पास भी आया जाएगा, मैं भी देख ही लूँगा। नो इशू, नो इशू। पूरा कंटेंट चूज लिया क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ ना किया। अब किस आईडी में आया? मैंने आया पिक ही नहीं किया। शेन ब्रो, शेन ब्रो वेलकम टू द स्ट्रीम। कैसे हो, हाउ आर यू? इलेक्ट्रो एमसी ट्राई किया क्या? कतई ब्रोकन है। न्यू ईयर सेट के साथ पावरफुल बॉस स्पोर्ट। बिल्कुल नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। जस्ट जितने मैंने ये वीडियोस डाले थे, दो क्वेस्ट किए हैं। एक वो था सेक्रीफिशियल ऑफरिंग वाला, एक स्ट्रेंज स्टोरी, बस दो दो ही किए हैं। वो इतने लंबे लंबे क्वेस्ट थे, वही करता रह गया, और कुछ किया ही नहीं। नथिंग एल्स। लेकिन करना होगा तो यार। श्यांगलिंग तो काम करेगी नहीं, उसके रहने दो। शिंचू, मोना एंड अयाका करो नहीं। श्यांगलिंग तो काम करेगी नहीं, मोना ठीक है। गान्यू, मोना, डायोना, स्काईबार्ड और प्रोटोटाइप कमिंग सून। गान्यू विल कम। अभी तो फिर अयाका पुल कर लो, उसका गेम प्ले देखना है ओपन वर्ल्ड टीम के साथ। फिर भी बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन, 7 घंटे खेल लिया। मैं बता तो रहा हूँ कि मैंने दो वीडियोस डाले हैं ना। एक ऑफरिंग वाला डाला था, क्वेस्ट किया था मैंने ऑफरिंग वाला, सेक्रीफिशियल ऑफरिंग वाला किया था। एक मैंने किया था स्टोरी वाला, जो स्ट्रेंज, क्या नाम है उसका, हाँ द स्ट्रेंज स्टोरी। वो दो किए थे मैंने, तो मुझे बस मैंने वही किए हैं सारा दिन में। आज थोड़ा मैं बिजी हो गया था फिर कुछ काम पे। मुझे लग नहीं रहा कि मैं अयाका के लिए जाऊंगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। यू कैन ट्राई योर बेस्ट। ओके नाइस। सर हमें अयाका नहीं दिख रही, हमें अयाका नहीं दिख रही। अयाका पुल ही नहीं की भाई पहले। गेम ही नहीं खेली, पहले ही स्टार्ट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट मैं। अभी देख लो आपके सामने, कुछ नहीं किया, कुछ भी ना किया। ये देखो खाली पड़ा सब कुछ। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल भाई, कैसे हो? हेलो ब्रो रचित भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। अली भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। आया का पुल करोगे? 50-50 हूँ अभी। मैंने नहीं, 8 घंटे पर क्वेस्ट ख़त्म नहीं हुआ। अब कल खेलूँगा। ओ
कोंडा विलेज वाली वीडियो पे हमें लाइक एंड शेयर कमेंट पेल दिया था, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पजल के ऊपर वो अंडरग्राउंड वाली पजल है ना, पजल्स बढ़िया है यार, मुझे अच्छी लगी वो यार। मैं तो यार वही करता रहा, सिंपल सी बात है। देखो मैं साफ बताऊंगा आपको कि मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, बस पजल वाली स्टोरीज की हैं, 2-3 क्वेस्ट किए थे अपने मेन अकाउंट में बस, और कुछ ना किया। बाल इज टेरिफाइंग मतलब कि मतलब स्पॉइल कर रहे हो, अभी स्पॉइलर दे रहे हो, ठीक है ना। सर आई हैव 10 ऑन पेटी, आई गॉट कैचिंग ऑन बैंडर, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई गॉट स्पाइन, ओके वेरी गुड है। मेरे को बस कौन बोलते हैं इसलिए ऐसा हुआ। नाइस भाई, ये क्वेस्ट ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, अच्छी बात है ना, कंटेंट ही कंटेंट मिल गया। नाउ आई हैव 47 बोलो अगेन एंड वेपन वेंडर, गुड गुड गुड। अंडरग्राउंड वाली क्वेस्ट तो इजी थी, नो स्पॉइलर जस्ट टेलिंग, ओके। सच्ची कह रहा हूँ, जिसने स्पॉइल किया ना, स्पॉइलर दिया, बैन कर देंगे उसको, बस सीधी सी बात है। और सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि सबको स्पॉइल करोगे आप स्टोरी को, तो डोंट डू दिस। अंडरग्राउंड वाली क्वेस्ट तो इजी थी, इजी। मैंने कब कहा कि भाई परेशान कर दिया, हैरान कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इलेक्ट्रो दिख तो रहे हैं, ओके, पर कैसे तुम पता नहीं चल रहा। तो आप अगर रात 4 बजे तक खेलोगे, नहीं खत्म, शुरू करने लगा हूँ भाई मैं तो अभी इसमें, देखा। सो नाउ अगर मैं खेलूँगा तो मैं अच्छे से खेलूँगा, क्योंकि मैंने मेन अकाउंट पे तो स्किप ऐसा किया था। स्टीम में भी मत करना वरना आपको भी बैन कर देंगे, क्लैश किया तो। मैंने सुबह किया था, स्किप किया था सब कुछ मैंने, 100%। अपने मेन अकाउंट में मैंने स्किप किया, एक लाइन तक नहीं पढ़ी मैंने कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेन अकाउंट से स्किप करता गया मैं बिल्कुल 100%। भाई 15 की वॉचिंग, 16 की वॉचिंग हो रही है और लाइक नहीं किया आज आप लोगों ने, ऐसा क्यों? किस बात के लिए खफा हो आज आप लोग? किस बात के मतलब बदला ले रहे हो आप मेरे से आज? क्या आज मैंने लेट स्ट्रीम किया और लेट लाइक करोगे? नाइस भाई। नॉट मैंने तो फिजिकल रेजिस्टेंस, अच्छा ये भी सही है। अयाका ब्रोकन एज F2P, ओके। हेलो सर आयुष ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, अयाका पुल नहीं किया इसलिए खफा है हम लोग, पुल करो अभी। वाओ, डिसलाइक कर अर्ली टुडे, नाइस, मतलब बैठा ही था वो पहले ही है। बस्ट इज लाइक, हाँ वो तो हमने बात कर रहे थे ना कि 4300 के आसपास का मल्टीप्लायर अगर होगा तो बहुत ज़्यादा है। कचिंग मेन राइज हियर, नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत 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 मुबारक आपको एंजॉय करने के लिए। अयाका इज कूल एंड ओपी बट नॉट ब्रोकन, ये भी सही है। बट बस्ट एंड ई इज बेस्ट फॉर OE। सिब्रो में करनी चाहिए, मुझे नहीं मज़ा आया प्ले स्टाइल में, डोंट वांट अयाका। हाँ तो नहीं आया तो भाई छोड़ दो। अयाका डैमेज मेरे को अच्छा नहीं लगा, इतना हाइप था। समझ गए हम आपकी बात को। As you said, a real DPS Ayaka needs to be C6 for broken. broken होने के लिए तो C6 होना मांगता है उसको, broken वाला सीन नहीं हो सकता। इनाज़ुमा से ब्रेकअप लूँगा
काली विधवा देखूंगा अभी। काली विधवा, ब्लैक विडो, ओके। चीज मांग रहा हूँ, तोमा को गानी बैनर से पहले मत लाना। आई रियली नीड तोमा, देख के अच्छा लगता है, ओके। मैं होना चाहता हूँ बट आया का नाम मिलने का दुख नहीं हो रहा। अच्छी बात है। टोमा टोमा पोला में, हाँ पोला में आया का डैमेज तो अच्छे थी, लेकिन नॉट माई कप ऑफ टी। तो आपके कप ऑफ चाय के रचित, बिकॉज सी 13,000 15,000 डैमेज नंबर्स ऑन बस्ट, दे थिंक शी इज नॉट ब्रोकन बट दैट हिट 15 और 20, इमेजिन हाउ मच डैमेज शी डील नाइस। भाई पता क्या दिक्कत है, मैं बताता हूँ, उसमें दिक्कत भी है एक। हमने कल बात करी थी इसके बारे में कि 20 हिट्स के साथ उसका मल्टीप्लायर बन जाता है 4300 का, बट द प्रॉब्लम इज डेट 20 हिट करोगे आप, डेट इज द कंसर्न। अगर आप कहोगे कि हाँ मैं 20 हिट्स कर दूंगा, तो डेट इज नॉट ए रियल थिंग। फाइन, बट स्टिल बस उसकी बढ़िया है, लेकिन ठीक है, शी इज़ नॉट बैड। अगर आपका गेम प्ले स्टाइल नहीं है तो भाई अलग बात है, बस फिर और क्या हो सकता है। वीडियो दो C0 का लेवल 80 एपिसोड मेन वगैरह में फ्रीज कॉम पे 14 सेकंड्स लगा के क्लियर करने में। शाओ के लिए ग्लैडिएटर्स की टेंशन खत्म, आज और अपनिंग टेबल में सारा मेडल दे दिया, मस्त पीस मिल गए ग्लैडिएटर के। ओह नाइस, सही है। अरे मेडल के पीस क्यों दे दिए यार, मेरे साथ बात, मेरे वाले अकाउंट में दे दिए, मेरे वाले अकाउंट में मैडन के सारे पीस दे दिए। विश कर लिया सर, विश तो हो गया ढन डना डन, मिली नहीं। और 400 विश कर दिए मैंने, मिली नहीं मुझे, मुझे गारंटी में नहीं मिली भाई, क्या करूँ मैं। आई गॉट फॉर ऑल कैरेक्टर्स दो, ओके आई डिड नॉट वांटेड एनी ऑफ देम एंड हर कॉन्सलेशन नाउ सैड आई हैव टू ग्रीट हर। ओह मैं तो आयाका है, जल्दी करो भाई, कर दिया भाई, डन हो गया, डीलुक मिल गया, नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। कितने विशेस किए, दो, ओपी ओपी। भाई मैं ये जो बात बोली है ना, दू दू भाई ने जो बात बोली है ना, वो मुझे, मेरी परेशानी है वो। मेरी मेन आईडी पे मैं आपका खेल नहीं पाऊंगा, तो अच्छा फिर ठीक है, नहीं तो के चक्कर में, हाँ हाँ कोई ना कोई चक्कर नहीं भाई, अपना अकाउंट खेलो यार, पायरो सुपर मेसी सारे पायरो कैरेक्टर्स हैं। हाँ बन जाओ, पायरो सुपर मेसी बन जाओ फिर, सबसे बढ़िया सर्वप्रथम उसी के साथ प्रेम जगाओ जो सबसे आपको मन को भावे। मैंने तो यार खेला ही नहीं गेम को, सीधी सी बात है। मैं 3-4 क्वेस्ट किए थे, एंड देन फिर मैंने रिकॉर्ड वगैरह किए, अपलोड किए वीडियोस, एंड मैं थोड़ा कहीं बिजी हो गया पर्सनल लाइफ में, अभी मैं आया हूँ, थोड़ा कहीं बाहर गया हुआ था। सो मेन अकाउंट में मैंने ऐसा किया कि क्वेस्ट स्टार्ट किया, ठक 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 ठक, बिल्कुल एक लफ्ज़ भी नहीं पड़ा कि क्या है क्या नहीं। हाँ बट एक चीज़ देखी थी मैंने, जब योइमिया आई थी ना, योइमिया, वो देखी थी मैंने। नमस्ते नमस्ते जैक फ्रॉस्ट ब्रो, क्या हाल चाल है। वो मुझे बड़ी अच्छी लगी जब वो आई, तो उसको देखने के बाद मुझे एहसास हुआ, फील हुआ, मुझे लगा कि अयाका को बोल दो कि रुक जा ओ दिल दीवाने, मैंने 12 सेपरेट पीसेस रखे हैं चीची बारबरा डायोना के लिए, माइडन गायब हो गया तो मेरा भी सेम रिएक्शन होता। सही में भाई। कुणाल भाई क्या हाल चाल है, कैसे हो।
3 artifacts. अच्छा If you ever want to गेम trade में tactics, शिंचू I'm कैन always ready. वैप एवरी 1 out of 3 hits to your social media मैम. ओके बेस्ट गेमिंग नहीं मिली अब तक आयाका. जस्ट टेस्टेड या क्या ट्रीटेड क्या Power that ended Python! I'm going in! Back off! Moments of birth. टेस्टेड कैसे टेस्ट कर लिया उसमें जो मतलब उसका ट्रायल टूल में दिखता है कुछ ऐसा समथिंग ना. ओ अरे मैं यार चैट पढ़ता तो तुम लोग मतलब धोखेबाजी करने लग जाते हो यार. ऐसा नहीं है, दिस इज बैड थिंग. मैं तो भाई अपने ओल्ड कैरेक्टर्स के साथ खेलूंगा. बहुत खुश हूँ, बहुत मज़े आ रहे हैं उनके साथ खेलने में. रीड अबाव. ओके ब्रो आज तुम मत किया करो ऐसी बातें कर किया करो. नो ब्रो 50-50 सा डीलुक मिल गया. ओके 70 विशेस में डीलुक 3 इंडिंग. ओके 1 रेजर 2 सैनिटी एंड 1 पोस्टर बीटी. ओके ये मैंने तो बात है वैसे ये एनपी पे जो नंबर्स लाइक होते हैं. मेरा फ़ोन ख़त्म हो गया. इनाजुमा स्ट्रीम कैसे करूँगा. ख़त्म कैसे हो गया मतलब भाई किसके में लग गया वो आ रहे हैं. हाउ टू क्राफ्ट इनाजुमा क्राफ्टेबल वेपन्स बताओ भाई. जिन लोगों ने खेल लिया बता दो भाई को. कृष्ण भाई को शर्मा जी को बता दो भाई. इस गेम में कचिंग की सिक्योरिटी बफ तो नहीं कर दिया. मेरी कचिंग बहुत डैमेज दे रही है. सच्ची में बफ दे दिया क्या आपके को. वेस्ट आर्टिफैक्ट तो डाल लो क्राफ्टिंग टेबल पे. वेंडर मिलेगा. नान्यू भी अच्छा होगा मेल्ट के लिए. रीड अबाउट प्रिंस. सर जी आज AR-50 हो गया और 30 के आपको आपके वर्ड से 100 भरा. हाँ ठीक है मोस्ट वेलकम. अभी कुछ नहीं करूँगा भाई. औजुल भाई कुछ नहीं कर रहा अभी. मैं कुछ भी ना कर रहा. My friend got Ayaka but she's small and healer. हिमालयास की पढ़ाई पे. अच्छा पहाड़ी पे करो. शिवा भाई ने आज अच्छा पहले ये बताओ लॉर्विन ब्रो पुलिंग शुलिंग करी या नहीं करी. पहली बात नंबर 1 पहला क्वेश्चन. पहले सुन लेना जवाब मत देना. पहली बात कि आपने इस करंट बैनर पे पुल किया या नहीं किया. नंबर 2 पे अगर किया तो क्या हुआ. अगर नहीं किया तो क्या इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके माइंड में भी सर वही बात है जो मेरे माइंड में है. ये बता दो अब. शिवा भाई रेफ्रिजरेटर में सिट कर रहा था. अच्छा मत लिखे यहाँ गरीबों की चैट नहीं पढ़ी जाती. पढ़ रहे हैं सर ऐसी बात नहीं है यार. मैडलर ब्रो क्या हाल चाल. गुड मॉर्निंग. कलेक्ट हो गया कल सारे बीबी पे डाल दूंगा. वो वेस्ट निकलेगा. ओके नहीं किया और नहीं करूँगा. बस सच में सीमा की मजाक नहीं कर रहा. 33 पीटी हो गई. गुड है. पीटी बिल्ड हो गई ना. अच्छी बात है. कुणाल भाई हैं यहाँ पे.
सर जी सुकुला ब्लॉसम चुरा लूँ आपके संसार से? आ जाओ चुरा लो, बहुत सिंपल काम है मेरे संसार में एक, कि मेरे पास अभी वो ओपन ही नहीं है। चुरा सकते हो तो चुरा लो, टैलेंट है अगर आप में इतना तो चुरा लो भाई, मना नहीं कर रहा मैं। बट बस दिक्कत यही है कि मेरा इनाजुमा अभी लॉक्ड है, तो वो अगर कर सकते हो तो उठा लो सर। Everybody stand back! दुनिया ने वीडियोस डाल दिए, ख़त्म भी कर दिया सारा कंटेंट, मैंने देखा तक नहीं अभी उसको। ये तो गलत बात है यार, मतलब शोले वाले सांबा की तरह इतनी दूर दूर खड़े हो जाते, कैसे मारूंगा भाई तुझे मैं? बाइडू के साथ ही खेलने के लिए हम तो प्रसन्न हैं भाई, हमें ना चाहिए कोई भी। भैया आर्कन क्वेस्ट करो करूँ मैं तो, अरे खुद कह रही हो कि भाई मतलब स्पॉइल मत करना, ख़राब हो जाएगा, मत करो मत करो मत करो स्टीम। मैंने तो मॉर्निंग में भी इसीलिए नहीं किया यार, वहाँ पे भी मैं स्किप कर रहा था। मैंने अपने मेन अकाउंट पे अपने क्वेस्ट ख़राब कर लिए इस चक्कर में, सच्ची में यार। Why do they never miss? I'm going in! Feel this ancient power. Gather. I will have order. आज का दिन बड़ा अच्छा है सर जी वैसे, हाँ गुड है सर, काफ़ी अच्छा है मेरे शिवा भाई। वो किसके अकाउंट था, करेक्टर के वेपन पे बोला सर, फिशियल और बैडू पे काम शुरू कर रहा क्या? और मेरे तो सेम रीज़न में दिल पे पत्थर रख के स्किप कर रहा हूँ सबको। करो 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 करो। अब मैं गानियों को पुल करूँगा एमओस के साथ, 40 तो मांग लियो। ओके ये भी सही है, करना भी चाहिए भाई, आपके पास एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि इसको ही पुल करना है तो उसको ही पुल करियो। एक तो इरादे बदल लेते हो। Burst forth. बाइडू है इसमें C6 एंड जोंगली का बिल्ड दिखा देता हूँ। Come to be. Back off! अब हम चलें इनाजुमा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं इतने क्वेस्ट अपने इतने अकाउंट्स में करूँगा कैसे, कैसे करूँगा? रॉकिंग लेवल 20 वेपन ऑन आयाका, नाइस। वेपन असेंशियल मटेरियल के लिए वेट करना पड़ेगा मुझे। हाँ सर वो बन जाओ, बेल बन जाओ। आपके मन में क्या चल रहा है वैसे, कहीं योमिया के बारे में तो नहीं सोच रहे? हाँ हाँ मैं ब्लर वाले में कर दूंगा, तुम ना करोगे, झूठ बोल देते हो यार। तो आप लोगों ने मेरा वो अकाउंट पिछले जो अभी वो आया था ना आइलैंड, आपने कुछ नहीं किया उसमें, दो दो बंदे खेलते हैं, आप लोगों ने एक क्वेस्ट भी नहीं की उसमें, एक भी क्वेस्ट। वहाँ पे सारा कुछ मुझे बाद में जाके पता चला कि भाई आप लोगों ने किया नहीं, मुझे करना पड़ा। और उसके बीच में भी एंड में जो वो जिसमें प्रेशियस चेस्ट वगैरह मिलती थी वो वाले तो ख़त्म, मेरे स्किप ही हो गए, मिस हो गए, वो छोड़ ही गया मैं। Ad Astra Abyssosk. कर दूंगा, सच बता रहा हूँ। चलो देख लेते हैं, मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ दूंगा फिर उसको। अब ये ना हो कि भाई मतलब कल को मैं देखूं कि, क्योंकि वहाँ पे करना ज़रूरी है। वो रीज़न सिंपल है कि माल पानी बहुत मिलेगा वहाँ पे।
इनाजुमा 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 हम जा रहे हैं, अब हम इनाजुमा में जा रहे हैं। और भाई मैं बड़े आराम से खेलूंगा, धीरे धीरे से, हौले हौले। ये मत बोलियो कि जल्दी स्किप कर दो, ये तो हमने देख लिया एंड ऑल, ठीक है। क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ। आप उसे करोगे क्राफ्टिंग टेबल में आर्टिफैक्ट एक्सचेंज, देखेंगे भाई, अभी कुछ नहीं पता। नो आइडिया भाई, अभी नो आइडिया। अयाका रिव्यू करोगे? लेवल तो नहीं, अभी नहीं, अभी अयाका के बारे में आई हैव नो आइडिया। मैं आज गेम से बहुत दूर था, आस पास भी नहीं आया, और मुझे इतना कंटेंट के बारे में पता नहीं है, और ना ही मुझे अयाका के आउटपुट का पता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कि मैं क्या क्या सिस्टम है उसका। जस्ट मैंने 2-4 क्वेस्ट किए थे बेकार से, उनकी मैंने वीडियो अपलोड कर दी, बस इतना ही किया मैंने, और कुछ नहीं किया। मेरे पास 20 पुल्स हैं दोनों पे, मैंने 10 कर चुका हूँ। अयाका के ऊपर मैंने 11 पुल कर दिए आज सुबह स्टीम पे मैंने 11 पुल कर दिए थे, एंड आई थिंक आई एम डन विद इट। बस एक मतलब कि इम्पॉसिबल टाइप लक के साथ मैंने ट्राई किया था। और रही बात पुल करने की अयाका को, तो गाइस देखो मैं सिंपली बता देता हूँ आपको कि शी इज़ गुड, शी इज़ नॉट बैड, शी इज़ ओपी, सब कुछ है। एंड डीपीएस वाली Ah, yes. खूबियाँ भी हैं उसमें, सब कुछ ओके है, एवरीथिंग इज़ फाइन। There you बट are. You're the मैंने child of Beto we'll be टेक्निकल taking to लेवल पे जाके Inazuma, उसको right? अभी उस तरीके से देखा नहीं, Oh, लेकिन is that right? एक बात कहूँगा Well, it's an honor to कि meet you. Our समथिंग fleet इज़ has मिसिंग। nearly completed reprovisioning. Once the crews have taken a head count, Captain Beto मैंने sent me उसका to come टेस्ट get you. खेला था, We'll weigh ट्रायल anchor किया as soon था। as you're... Seems Beto समथिंग is इज़ the मिसिंग, captain of क्या the herd. अभी नहीं मुझे पता। Of course. There are many things that the captain insists कुछ upon. ऐसा है जो I'm sure उसके you'll गेम see प्ले for में है, yourself once और you're on board. आई एम नॉट रियली अप फॉर दिस। So you'll be heading off then? Whether कोई the गड़बड़ journey है। before you leads to the heights of the heavens or the depths of the abyss, each step आपके you रिजल्ट का take is मेरे another मेरे विशेष का achievement. रिजल्ट ये निकला कि मैंने 11 विशेष किए Until we और meet 11 में again, मुझे निकली नहीं। add Oh, it's kind of hard to say goodbye क्रिट डैमेज now. मिसिंग, We practically see. well, if that's how you डिसलाइक, feel, हाँ why भाई not कर come गए। and find me when you arrive? 150 I'll be awaiting you in डैमेज Norokami Island. है ट्रायल पे। हाँ तो इतना तो नॉर्मल होगा ना। इस बार 50-50 मिला, एंड 15 विश के बाद अयाका मिल गई। ओह ग्रेट ब्रो, कॉन्ग्रेचुलेशन। अयाका चार्ज अटैक बहुत खटक रहा है, मुझे खटक रहा है। So there's another. Well, I guess it's time for you to bid farewell to ये महाराज Liyue जी अयाका Harbor. मिले। हाँ Now that I've delivered Don't my dislike message, भाई। I'll be heading back. The ship is सर currently योमिया anchored ट्राई off कर of लेना, Stone स्टोरी में Forest. मिल जाएगा ट्रायल करने को। यो श्योर ब्रो श्योर। मेरे स्टैट देखना थोड़ा अयाका की पर प्लीज़। Okay, thanks. Just following orders. एक्ट 2 नहीं, चैप्टर 2 एक्ट 1। आज 49 विशेष है, 60 हो जाएंगे अभी। इसमें नहीं हो मैडलर तुम यार, मेरे ख्याल से ऐड नहीं होगा इसमें। है ठीक है। अयाका बेबी, ट्वेंटी 29 क्रिट डैमेज, 20 क्रिट रेट बहुत कम है भाई। डैमेज सही है, बट यूज़ कर रहे हो ब्लिजार्ड, बहुत बढ़िया, फिर तो ज़बरदस्त है। मिसल भी है, सही है यार, मतलब फ्लैक्स कर रहे हो। अच्छा समझ गया। डीलुक रिव्यू करोगे? नहीं डीलुक नहीं रिव्यू करता मैं, डीलुक मेरे पास है नहीं ना, मुझे डीलुक का कुछ पता है, नो आइडिया। Cold beer.
If you ever want to trade tactics, I'm always ready. अयाका के लिए 5 स्टार वेपन कौन सा बेस्ट है? उसका मेन सिग्नेचर नहीं, 4 स्टार। 4 स्टार बताओ भाई, अयाका किसके पास आई है? जिसके पास अयाका है बता दो भाई, 4 स्टार वेपन कौन सा बढ़िया रहेगा अयाका के लिए। ब्लैक लिफ फॉन्क्सबोर्ड और ब्लैक लिफ फॉन्क्सबोर्ड। अयाका और शाओ में डेवलपर ने भेदभाव किया है बहुत। अयाका को और बेटर चार्ज और अटैक दे सकते थे। मुझे उसके चार्ज अटैक में कुछ ऐसा लगा ही नहीं जितना उसका हल्ला कर रखा है। सीरियसली नहीं लगा। बाद में हो जाए पता नहीं भाई, जितना मैंने खेला था जल्दी में कुछ खास और स्पेशल नहीं मिला। सॉरी इटाची, हमसे गलती से मिस्टेक हो गई। सॉरी भाई। क्या हुआ भाई? बट हैपन। गन की रिपीट पहले लगे हुए थे। हाँ, अंटिल दे सॉ चार्ज अटैक मल्टीप्लायर। मत करो क्वेस्ट। क्यों ना करूं भाई? सुबह भी नहीं की। अब तो यार बहुत लोगों ने खेल लिया, अब तो मैं खेल सकता हूँ। इसीलिए मैंने तो सुबह इसीलिए नहीं खेली कि चल भाई सही है बात, ख़राब हो जाएगा, मज़ा ख़राब हो सकता है लोगों का। अरे मैंने खुद ही नहीं कुछ किया यार। We finally made it. All these years, come rain or storm, the Crux fleet has never suffered a delay. If it were anyone else, I might have set sail already. हाँ फिर कर देगा। हाँ ठीक है। मैं ज़्यादा करूँगा अभी नहीं भाई, थोड़ा ही करूँगा। नो इशू। नो प्रॉब्लम रोशन भाई। देखो ऐसा है इटाची ब्रो कि नॉट गुड फॉर अदर्स ना। Don't लाइक get मैंने नहीं, serious, I'm only joking. लाइक मैंने ब्रो, You're just लाइक on time. मैंने The crew's नहीं just खेली finished गेम अभी making तक। final preparations. नहीं किए क्वेस्ट, नहीं किए, कुछ भी ना पता मुझे इसके बारे में। एंड आप उड़ा रहे हो यार स्पॉइलर, मतलब बात ही खत्म कर दिया आपने आके। कुबेर वाले अकाउंट से खेलो, बहुत मुश्किल होगी। Well, now that everyone's here, माई ऑर्डर करिए। सॉरी नहीं पता था मुझे। ओके। we set sail for the land engulfed by storm and tempest, the nation of eternity. भाई मैंने सुबह भी बोला था, मैं अब भी बोल रहा हूँ कि इन्होंने जो हमारी बेड़ू है इसको बढ़िया कर दिया। देखो ये तो पहले मोटी होती थी, अब ये पतली कर दी इन्होंने। इसका मतलब कि फिगर मेंटेन कर दिया, डाइट वगैरह पे ऐसा कुछ किया है, मतलब बढ़िया लग रही है अब तो ये। Anchors away! मतलब मुझे पहले कभी बढ़िया नहीं लगी है, अब ये देखने में बढ़िया लग रही है। नाइस।
सच में लग रहा है इनाज़ुमा में फाइट कम है, लग रहा है। ओके सर मेरे को कोचिंग C1 बता दो क्या होता है। C1 क्या होता है मतलब, ये क्या सवाल था। कोचिंग C1 क्या होता है, ये सवाल बड़ा अजीब है भाई, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। ये टोमा सच में अयाका का बॉयफ्रेंड है क्या, या सिर्फ दोस्त, बॉयफ्रेंड है। ये भी सही है, मतलब बता दो कैसे यूज़ करो। अच्छा उसके साथ उसके चार्ज अटैक It's hard में to remain on dry C1 land के for साथ so long. एलिमेंटल स्किल को यूज़ करने के बाद जो उसको बफ मिलता है वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया है। सो नॉट बैड एट ऑल। भाई वापस आएंगे ये, ऐसे ही चलते रहेंगे बस अंधेरा करके। मतलब उसके ई का AOE बढ़ जाता है डैमेज के साथ, हाँ 50% तक का फ़र्क पड़ता है उससे। Oh, hi there. इन्फ्यूज चार्ज अटैक ओपी, नहीं चार्ज So, you अटैक नहीं, finally made it. You sure kept me waiting, उसका Captain. And it appears we have a couple of stowaways. Or perhaps I should say, honored guests. Shush! You can blame your almighty shogun. The tempests around Inazuma have been growing all the more fierce lately. Though the fleet was fully up to the challenge, the inclement weather still caused some delay. Now then, let me introduce everyone. This is Toma, a trade partner that I've gotten to know recently. You don't know how long I've सब been भाग waiting to लिए। see you. ओके कोई Toma, ना, these two are... Oh, no need for introductions. Their reputation precedes them. It seems even the stormy seas can't keep rumors of these outlanders' sterling deeds at bay. Oh, it's sure nice to hear you say that. With any luck, it'll give ये you a बस head 2 start घंटे here. लेगा। हाँ बस ठीक है, 2 Toma's घंटे तक resided स्ट्रीमिंग on करनी है Rito हमें for वैसे quite भी। some time now. It wouldn't be going too far to say he's the fixer around these parts. If you run into any problems here, just talk to Toma. But if he tries to pull any moves on you, I'll be sure to deal with him personally the next time I'm around. No need to worry. I'm sure we'll get along just fine. Good. Then if it's all settled, I'll be going. I wouldn't want to be caught with my sails down here. I do have a wanted fugitive on board after all. Oh, right. Kazuha. Until next time, traveler. Remember to give it your all, no matter what perilous storms you may encounter. Fair seas, Captain Beto. Bye-bye. कैप्टन बाइडो। Now then, first things first. We need to go get you registered at the border checkpoint. Paimon thought we were supposed to चलो be बाय सर, keeping नींद आ रही है। things ओके on the बाय down बाय बाय, low. टेक केयर। Are we just gonna बताओ क्या walk हाल into चाल है, the सब बढ़िया। government's हाँ hands? सब ठीक है भाई, बढ़िया ही है। थोड़ा बिजी रहा यार Don't मैं आज underestimate the कहीं reaches of the और ही और Sokoku बातों में। decree. You wouldn't be able to डमरू भाई avoid ओपी inspection डमरू भाई, even if you क्या हाल tried. चाल भाई के? बढ़िया भैया, So आप we बताओ have to क्या हाल play चाल, by the कैसे हो? rules, हाउ आर यू? even if we're kind of bending them. हम बढ़िया मस्त, आप बताओ कैसे हो?
सो किया पुल उसको, अयाका को पुल कर लिया। ये ब्राइड वापस ले लियो। हाँ डमरू भाई बड़े लोग। Cold beer after a hard day's work. Nothing like it. Hello? Please state your name, identity, and the purpose of your visit. Oh, except you, Toma. You must be new here. चुन्नी राजा इधर Excuse तो आ me? जा। Please provide the information मौजूद requested दीदी and मैं also सोने जा declare रहा any हूँ। goods you are carrying बहुत with खेल you. लिया गेल्शिन। ओके बाय बाय बाय, टेक केयर। Currently, only members of the International Trade Association are authorized to engage in the import and export of goods. Do you have your trader's permits? My apologies, but I'll have to ask you to... Here are their entry papers for your kind perusal. What? Ugh, take your time. No rush or anything. I just wanted to see what you'd say. Sorry about that. I see. Okay. Your papers are all in order. Welcome to Rito. वेलकम टू रीटो। Where do we go next? The Outlander Affairs Agency. They only check entry permits here. If you want to remain on Rito, there's a process you have to go through with them. Sheesh. So it is super strict, just like everyone says. Well, let's So not Ayaka is forget better that to than, everyday folk in Inazuma, people from everywhere else are referred to as outsiders. As the word suggests, Outlanders aren't very welcome in Inazuma with the Sakoku Decree in force. Not even on Better than Rito, Ayula? where they've Okay. established an outsider settlement. I like how you think. I've got a feeling we're going to get along very well. Now, let's head over to the Outlander Affairs Agency. Most of the current rules were put in place by the administration of Rito, the Kanjo Commission. A Kanjo Commission? Yes, one branch of the Tri-Commission of Inazuma, responsible for growing and managing the nation's wealth. You really haven't heard of it before? गुड है यार। तो अयाका को पुल कर लेंगे, कोई Completed the बात नहीं। entry procedures, yes? Tomei- And now you Tomei want to child apply को for कर देना। residency? तो मैं जब Both बजट of जाए you? दोनों एक ही बात बोली है भाई। नाइस। Yes, please. यस प्लीज। Okay, the processing fee will be 2 million mora. 2 million? For a processing fee? Are you serious? That's right. 1 million per applicant, which makes 2 million total. Don't worry, you can trust my math. Paimon wasn't so much questioning your math as... Ma'am, these two here are good friends of mine. I think you'll find I'm one face you recognize. Ah, Mr. Toma, it's you. By way of courtesy, allow me to reduce it to 400,000 mora total. Thank you ever so much, Miss Eureka. But as this is just a processing दूंगा। fee, I think बड़े 600 नंबर वाला mora नहीं should आता cover it तब if तक I'm paying on their इंस्पिरेशन behalf. नहीं मिलेगा अयाका I'll के treat you लिए। to dinner too. How does that sound? मुझे प्राइमोजेम चाहिए, फिर मिल जाएगा By बस। all means, bargain the price down, but... All right then, as you wish, Mr. Toma. I will make a record. Much obliged. सिंपल है बात, सिंपल। What? She went from 2 million down to 600? There's something seriously wrong with people's sense of finance around here. It's not as mind-boggling as you think. Processing fee is just a figure of speech. The way some here at the agency see it, the fees are easy money, so it becomes a question of how much they can make.
So when the day comes that some poor merchant from overseas with more money than sense gets stuck here and needs to apply for ये residency. कितनी बातें करेंगे अभी, बहुत करेंगे ना, Them for all their मुझे याद है. Exactly. It's at times like this that having a local friend really comes in handy. रिजी भाई मुझे इनाज़ुमा का कुछ समझ में नहीं आया जैसे क्या. अच्छा, अब वो समझ में नहीं आया. मैंने वही कुछ किया. मैंने मेन स्टोरी जो है, मेन स्टोरी क्वेस्ट, वो मैंने किया ही नहीं. मैंने साइड मिशन, साइड क्वेस्ट, वर्ड क्वेस्ट वगैरह ही देखा था. मैं मैकेनिज्म ही समझ रहा था उनका, क्या है, कैसा है, क्या क्या सिस्टम है. वो सही लगा मुझे. अयाका मिला तुझे? क्या? हाँ मिल गई. हाफ एट आवर से 1 घंटा मिनिमम लगेगा. Yes, 1 but घंटे में ये when you're an कंप्लीट हो जाएगा outlander पूरा. in Inazuma, far from home फिर in तो this ठीक है यार. close-nation era, there's very little that can be done about it. The most that overseas merchants can do to look after themselves is stick together. That's how the International Trade Association came about. So it's a trade association? बट मैं इनकी बातें सुन के built by करूँगा. and for Outlanders? जल्दी जल्दी फिनिश नहीं Yep. करूँगा एक्चुअली. And as well as advancing commercial interests, the association I provides really help, want to support, know. and structure for Outlanders trying to आई रियली survive in वांट टू नो द retail. स्टोरी ना. Essentially, it's an association devoted to both commercial excellence and survival skills. Sounds like just staying alive is an achievement when you're an Outlander in Inazuma. I see. So this is the real purpose of your trip. Yes, given that you are Outlanders, it's certainly a lofty aspiration. डायलॉग स्किप करने After में all, मुझे the 2 Raiden वक्त Shogun लगेगा. is the most exalted and revered one in all of स्किप मैं कर नहीं Inazuma. सकता यार. She is a deity who reigns on high, while all other life gazes up in awe. Huh. I was तो going मैं to ऑलरेडी say कर nothing चुका is हूँ set in स्किप. stone when it comes to who you सुनना है मुझे encounter क्या in बात this करते world. हैं ये. Who's to say you won't happen to run into the Raiden Shogun one day after lunch? Uh-huh. And is that likely? Okay, 1 I'll घंटे give it to मिनिमम you लगेगा. straight. यूमे का I भी know of a way to आएगा. introduce you to जो the भी Raiden नए प्लेयर्स Shogun. आएंगे वो तो यही सोचेंगे कि बस स्टोरी Wow, गेम है, the खेलने real को कुछ fixer's मिलता ही better नहीं. connected than we thought. I mean, it will take all the resources I have at my disposal, but it can be done. However, before we get there, connections come at a high price, you understand? Not you too. No, no. In this instance, when I say price, I'm not talking about Mora. In fact, there's no real cost as such. It's just that if this is something you really want, you'll have to agree to help other people solve some of their problems first. I like to do things in a way that keeps everybody happy. It's my own personal rule मैंने for मैकेनिज्म dealing with कैसे यूज situations like करते हैं वो this. बताओ. एंड वो इलेक्ट्रिक Sounds बबल्स very नहीं reasonable बोला. to Paimon. You're the man in the middle. जब उस पे So हमका you बता have दूंगा. to trade favors to keep everyone indebted to सारे you. मैकेनिज्म कैसे यूज कर. Why do I get the feeling you're making me out to be some sort of crook? Never mind. Here's the situation. As I touched upon earlier, the members of the International Trade Association are constantly struggling to survive. Recently, things seem to have gotten more difficult than ever for them, so just go and check things out. See if there's any way you can help. The head of the association is called Caricio, and he's a good friend of mine. Go talk to him. I'll wait for you here. बाल अयाका के साथ डेट पर जाओगे तो वो पिज्जा मांग. इतने लंबे लंबे मैसेज लिखता है ना बंदा, ये क्या ही बताऊं. Enjoy the blessing of Lesser Lord Kusanagi. An ancient blessing. Huh? Hello there. You must be seeking refuge with the International Trade Association. The Outlander Affairs Agency took you for all you're worth, I suppose. Ah, good. That's a relief. You need to be careful, or you'll find yourself losing your savings all at once. We heard the association has been having some difficulties lately. Is that true? Yes, left, right, and center. Obstacles at every turn. But that's nothing new for us. The Sakoku आज कैस्ट decree एक्सप्लोरेशन certainly एयर makes स्टेशन things 7 difficult for टेलीपोर्ट स्मार्ट anyone अनलॉक who किया. wants to come here from सारे क्रेड्स एंड overseas. मैकेनिज्म But it's not the root हाँ cause धीरे of धीरे our करो, woes. सब सही हो जाएगा. गेमर भाई The वेलकम टू द Sakoku स्ट्रीम. decree क्या might हालचाल. restrict our scope of activity. But in and of itself, it doesn't stop us from being able to enjoy a comfortable existence. No,
what's really squeezing us Outlander merchants dry is those Mora grubbers from the Conjo Commission. Oh, of the 3 commissions, that's the one that oversees everything on retail, isn't it? That's right. They impose astronomical tax rate, unbelievable regulations, and that's not the worst of it. They just issued a new tax decree recently that, for some reason, completely changes the way we pay our taxes. It used to be Mora, but now it's something called Crystal Marrow. Crystal Marrow? Crystal What's Marrow. that? ये कितना क्या पता नहीं भाई Something किया नहीं मैंने most अभी of us in the association had never heard of before either, until the new decree came along. Eventually, one of the older Liyue merchants recalled that he once ये बस shipped सबका a अच्छा batch of नॉलेज it हुआ to तो उसके लिए Snezhnaya in सेपरेट his फार्मिंग youth. करना पड़ेगा हाँ करना पड़ेगा So, 12 in बजे order शुरू to pay किया था our 5 बजे taxes, we खत्म began हुआ an ओह arduous search for नाइस this crystal marrow. But then we found we'd only managed to create a bigger problem for ourselves. The rising demand for crystal marrow drove the price higher and higher. Now there's only one vendor who even has it in stock. We can't get a hold of it anywhere else. Isn't that what they call a monopoly? Exactly. So this vendor keeps pushing the price up, and we have no choice but to buy from them because the tax decree forces us to. It's a vicious cycle. The consequence of which is that our taxes will soon exceed our profits. And once that happens... We've tried communicating with the Commission directly, but this is a nation where the cries of a few struggling merchants will never be heard over the ever-present roar of thunder. Fontaine, my dear homeland. I Fontaine miss you an awful lot at the moment. Sounds awful. They're really bleeding them dry. What do you think we should do? स्पॉइल मत करो यार प्लीज मुझे इतना आपका बंटी 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 इतना डैमेज करता उसका बस्ट हाँ वो कितने डैमेज पे है इसलिए But Carice is the head of the association, and even he hasn't had any luck. Not to mention, we're Outlanders too. Right, and besides, I think this may well be the fate they've ordained for us. Okay. Well, we could try tackling the problem by going to the other party involved. That vendor... I've actually done business with him in the past, but after a point he stopped contacting us. I have no idea where he sources the stuff. Well, it definitely sounds like he's being unfair. How do we find him? We could go talk to him and see if he lets anything slip. Hey, that's a pretty good idea. Since you're not affiliated with the association and you're new to Rito, he may just let his guard down. If I remember correctly, our usual meeting point with him is under a tree by the coast in the residential district. See if you can find him there. Got it. We're on the case. बिना मतलब के केस पे लग गए आप लोग आके ये भी सही है Over freedom. Which one should I choose? अपन में बट को I देखते don't think I नहीं recognize you. Are you new बिल्कुल। arrivals? शैडो भाई क्या हाल चाल So, वेलकम what टू do द you need स्ट्रीम with me? The sheer nerve. You don't go around asking questions like that. If I gave you my sources, I might as well hand you the whole darn business. Trade secret. Got it? You know what trade and secret mean, right? This guy's got a bad attitude. श्रेयस हेलो क्या हाल चाल भाई मिल गई है आपका गुड सर कांग्रेचुलेशंस बधाई हो Are you even buying? Oh, I see what's going on here. Karisu and his associates sent you here to try and plead their case, didn't they? They're wasting their time. The price is non-negotiable, not by a single Mora. Hey, what's your problem?
मेरे फ्रेंड को मिला Get पर out उसके of here. पास Go कोई स्लॉट on. डीपीएस नहीं Tell them है। they're lucky to be buying from me in the first place, and they ought to be more बुरा, grateful. बहुत बुरा, If बहुत it weren't बुरा। for me, they'd be in seriously hot water. What are we gonna do? There's no talking to this guy. Good idea. Let's check back in. पुलिंग अयाका के सामने क्वेश्चन मार्क डाला है। समझदार हो गए। बट फ्रीज कॉम्प यूज करना नहीं है, सो कुछ अल्टरनेट बता दो। मेल्ट यूज कर लो, बर्स्ट डीपीएस बना लो। If you ever want to trade tactics, I'm always ready. कल भाई ना तो मैं बहुत काम आ रहा है। हाँ भाई आएगा भाई। भाई एमपीएस इसका ये लिपसिंग नहीं है, बहुत गंदा लगता है मुझे। अच्छा न्यू सेट देना पड़ेगा ना। न्यू सेट भी दे सकते हो और टू पीस भी यूज़ कर सकते हो। बस ज़्यादा तकड़ी लग रही है मुझे उसकी। न्यूकर बना लो उसको और क्या। That was quick. You resolved it already? Actually, we're having a little trouble. Oh? Well, by all means, tell me what you need. I'll help as much as I can. Getting you to go fixing things when you've only just arrived is quite a demand. Oh, that guy? I'm familiar. He used to be a bit of a sorry sight, selling shells that he'd collect on the beach just to get by, but he seems to have suddenly shot up in the world recently. I can only assume he must have found himself a patron after leaving the International Trade Association. Huh. You're saying he used to be a member of the International Trade Association? So he's an Outlander too? Yes. योमिया बोबुल Couldn't करूँगी। you हाँ tell when you spoke to योमिया him? को करूँगा मैं। देखते हैं अभी प्राइमोजेम्स तो मिल जाए हमारे पास, आ जाएंगे फिर क्या पता अयाका को भी कर लें। अभी कौन सा खत्म हो गया भाई अयाका का काम। That's right. Werner was born in Mondstadt, then went into the shipping business, trading Trade between between Leo Leo and and Inazuma. Inazuma। When Inazuma closed to the outside ब्रो world, पहली he was बार one of मुझे a group of कलवा होने से Outlanders विरक्त that नहीं ended हो up रहा। stranded on तो इसमें Ruto. बहुत काम आ रहा है इनाजुमा में। नाइस। Bummer. The International Trade Association was initially very generous to him, सुबह but गाइड over बनाई है, time, with अभी decree टेस्ट after कर रहे decree, हैं क्या? the association members found it increasingly difficult to make ends meet. हाँ So he left the association मैंने ये नहीं and किया turned his back कि on मैंने them. क्वेस्ट, मैंने मेन स्टोरी नहीं की। I'm sure it's more साइड nuanced क्वेस्ट than वगैरह ही that. किए थे। अभी और I करूँगा believe even the most और वीडियोस ungrateful डालूंगा। and जितना कुछ भी है cold-hearted सारा people कुछ still have some amount of छूट gratitude दूंगा and अच्छे warmth से। left in them सब somewhere. कुछ कल तक सारी वीडियोस डाल दूंगा जितना हो सकेगा मेरे से। Really? Is that all you need to know? Well then, it sounds like you may have found a way in with him. अब तो बड़े लोगों रात को 57 प्राइमोजेम से कल सुबह को 10 की। नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई। F2 भी गरीब बंदे हैं सर। क्या क्या मजाक उड़ा रहे हो यार। गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं हम। सरकार हमारी मदद नहीं करती, ओपोजिशन से हमें मदद लेनी पड़ती है। ये हमारा लेवल है। आप कह रहे हो कि हमारे पास रातों रात 10,000 वो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। डीपीएस हमारी बैडू है, एक में शिंचू है। 4 स्टार कैरेक्टर को हम डीपीएस बनाए खेलते हैं। 5 स्टार हमारे पास कोई कैरेक्टर नहीं है। What are you doing back here? Just because I Just got 'cause I plenty got of time plenty on of my time hands on my doesn't mean I hands, want to doesn't waste mean I any of want it to waste talking to my- you. Where's this coming from? Mondstadt? You were talking about Mondstadt.
goodness, I can sense it अब तो now. बड़े लोग नहीं रहे। So familiar, but ओके I है, can't सुबह remember the last स्ट्रीम time I was नहीं हुई, there. लेकिन करी थी मैंने स्ट्रीम। आज सुबह मैंने स्ट्रीम करी थी 8:30 से लेके 12 बजे तक। The scent of वॉचिंग नहीं थी Mondstadt. मेरे पास, नंबर 1 पे वॉचिंग नहीं थी, मैं Oh, how अकेले it ही बैठा था takes me ऑलमोस्ट। back. सेकेंडली बोर हो रहा था यार मैं क्वेस्ट कर करके, मुझे लगा मैं क्वेस्ट ऑर्गन की क्वेस्ट इनकी बातों सुन सुन के बोर हो रहा था, तो मुझे लगा मैं My hometown. साइड क्वेस्ट The कर लूँ, home of ज़्यादा बेटर है। freedom. तो मैंने How I वीडियोस long वगैरह to go रिकॉर्ड back करनी and शुरू कर visit. दी, जितना हो सका कर दिया। रात को करूँगा। Huh? What is this? Just close your eyes already. अब तो अमीर लोगों सर पर, ये मेरा अकाउंट नहीं है, ये तो किसी का अकाउंट है, डोनेशन में मिला हुआ है। You mean रहम, the गरीबों पे sound of the रहम। ocean? Leah Harbor. I can see it so clear. Xiao lanterns. This guy has a really active imagination. Either that or he really does. The Wait. कुछ Stop. वीडियोस पे बहुत That's अच्छा enough. रिस्पांस आया है। यस Don't make me relive यस it यस anymore. यस। My poor So, heart बढ़िया can't रहा। take it. You ठीक mean है, the folks from the International Trade Association? उड़ा देंगे। और And I suppose they are far from home. विश किया क्या just लोगों के like अकाउंट से? me. हाँ, 3 लोगों के अकाउंट से किया था, 2 पे स्ट्रीमिंग पे, 1 पे ऑफ स्क्रीन। तो जूब को मिली नहीं, प्रतीक को मिल गई, अयाका बस। दोनों मिलके इसे देश की मिट्टी की याद दिला रहे हैं। Often, I'll sneak down to the shore at night इमोशनल and अटैक listen हो to रहा the है। sound of the waves. I like to imagine it's the voice of my hometown, carried across the ocean. I've run into folks from the association more than a few times. Don't you think I've wanted to talk things through with them and free myself from this anguish? Well, no one's stopping you. They're so resilient. None of them had anyone else to rely on, so they rallied together, committed to finding a way to survive. नाइस, But I मेरे को भी couldn't do it. 79 पे I'm मिला। not strong गुड। enough. So I caved. Those people, they'd make the smallest of promises, offer the most measly benefits, and I'd do whatever they asked of me. And make Mondstadters look like the worst people in the world. Alright, I'll tell you the whole story. It's eating me up inside, and I can't take it anymore. अभी आया का You ready निकालूंगा to गारंटी talk में। now? निकालो निकालो निकालो। ये बताओ, 12 से 10 के हिल कब देगा? जिस दिन मैं अपने कुबेर वाले अकाउंट से खेलने के लिए सीरियस हो जाऊंगा, उस दिन। But I betrayed them. I can't show my face there. मैं एडफेक्ट्स के डोमेन में और गियर की एक भी डोमेन चेक नहीं किया मैंने, But now एक it's भी making डोमेन things चेक नहीं किया, right. कुछ भी चेक नहीं किया। So come on. पता नहीं, आई हैव नो What's आइडिया। the chest? What's the deal here? It's a scheme by the tax collection Ashigaru, Keijiro and his companions. They start by overtaxing the merchants, then take the extra crystal marrow they receive and stockpile it. Once the merchants run out of places to buy crystal marrow, they get me to sell that extra stock back to the merchants at an extortionate price, with the proceeds going to the tax collection Ashigaru. कुबेर है एक बंदा, अकाउंट है उसका मेरे पास। It's plain evil gouging them like this. I'm their puppet, yes. But my cut is a tiny fraction of what we take in total. It's barely enough for me to live on. Evidence? You're right. Without conclusive evidence, he will never admit it. मेरा तो Now सुबह that I से think कैप about हो it, रहा है। whenever ये I मेन report टाइम ही back to नहीं। him after a sale, अभी he तक आर्क always में heads कर to the रहा। same place. It's always made me suspicious. As it happens, I handed some Mora over to him not long ago. I can show you तो where मैं he भी went if कुबेर के you अकाउंट से want. खेलने जा रहा हूँ। ओके, Really? खेलो खेलो। Well, then there's no time to lose. Let's go. Keijiro! It's him! मैट्रिक्स भाई, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, After him. क्वेश्चन खत्म हो गया। मैट्रिक्स तो चला गया, नींद नहीं कर रहा अभी।
रची सुबह से एक एनिमी नहीं मारा पर C1 GG वाला He's getting further and further away. Let's catch up a little. Sorry. I need to think about it. Should I close? If you want to taste fun snacks, great wine. He's getting further. Ah, Ryoko, how's business? All the better thanks to your generous patronage. Good. Thankfully, I earned plenty these days. Oh, but of course, tax collection is difficult work. He's getting further and further away. Let's catch up a little. Now, He's getting further and further away. Let's catch up a little. भाग गया वो तो Further away. भागने लग गया वो what तो was that sound? Quiet. Don't let him find us. Must be. He's getting further and further away. Let's catch up a little. He's getting further and further away. Let's catch up a little. असैसिन क्रीड जैसी बना दी उन्होंने तो भाई ये विश्व मेरे को तो मुझे जैसे फिजिकल डिटेल्स नहीं है इसलिए टाइम लगा मुझे ये भी सही है What could he be doing at a place like this? It looked like he buried something over there, didn't it? Why don't we take a look? Whoa, it's a ledger. Boring. Paimon thought he'd hidden a big pile of morass. morass here Let me take a look here. Take a look here. Aha, yes! This is what we're looking Clear for. complete record of the A clear and transactions and each of the complete proof of the guild Great. Well, There we now we are. have our hard Let's- evidence. Let's go tell Karisu the good news, shall we? I'll... Huh? You aren't gonna come with us? I need a little more time before I'm ready to Huh. Poor Werner is a pretty... नाइस मतलब ये आर्कोन की क्वेस्ट है ये मतलब इनका क्या कनेक्शन भाई उनके साथ कुछ भी जोड़ रहे हो आप तो एसोसिएशंस ट्रेडिंग इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन का स्कैम एंड ऑल Should I close early? It's not like I'll get any customers. But we really don't have anything left. If this keeps up, our sales will come in at a loss. There'll be nothing left for us to do but starve. You know the decree. The rules are the rules. No discounts, no exceptions, and no excuses. And who are you? Another new member of the association? It just so happens that we found your little ledger, so now we're here to tell everyone all about how you embezzled crystal marrow to sell it right back to the taxpayers. Huh? Is this true? You've been swindling us! Well, you see, the taxes, सर जी Let me take a look at the ledger. प्रोग्राम पे वीडियोस बना दो Well, would you look at नहीं आ रहा that? मुझे समझ मैं Every कैसे यूज payment करते the हैं association has Okay. made is right here in your आई विल ट्राई personal माय बेस्ट ledger. कि जितना हो सकेगा मैं So, आज Mr. Keijiro, कल स्ट्रीम से since पहले you पहले have some वीडियोस काफी explaining कर to दूंगा do, how shall we settle जितना this? मेरे से पॉसिबल हो सकेगा यार so you think you can use this against me, do you? It's quite obvious that I'm merely trying to earn a modest living for myself, like anyone else. Word has it that samurai and the commission place great importance on reputation and prestige. Though I'm sure commission members won't blame you once word gets out. थैंक्स Huh? या ब्रो Is that a threat? Are you threatening me? No, not at all. I'm simply stating that it would be quite a pity if an illustrious gentleman such as yourself were to have their reputation tarnished. Well, even if what you say is true, what do you suggest we do about it? I राधे believe you राधे still भाई, have a quantity राधे राधे, of जय श्री crystal कृष्ण, marrow in क्या your हाल है भाई? possession, कैसे? correct? Perhaps स्वागत है that आपका। crystal marrow could be used as compensation for the recent tax hike, and us merchants could finally have some more breathing room.
Is that it? Oh, do you have any idea the hoops I had to jump through to get the crystal marrow and keep it hidden? Fine. In that case, I'll send it over to you today. And not even an ounce of shame for his actions. So Ayaka that's दीदी it? पुल किया नहीं My अभी shop's नहीं been की closed for weeks now. I've even had to ask my friends to help bail me out. What about my losses? Come on, Harrison. We've already struck a good deal here. I'm sick of being pushed around like this. I won't let him off so easily. Ayaka दीदी के लिए भी समय है थोड़ा Hey, what's all this racket? Does someone dare question the decree? Ah, Chief, you've arrived. What was all the commotion I heard थोड़े just प्राइमोजम्स now? हो जाएं फिर करेंगे भाई Oh, we were just discussing a पक्का minor करेंगे tax issue. I do my utmost to lend them a helping hand, but they're never grateful. A helping hand? The only thing you're doing is stuffing your greedy pockets with our hard-earned wealth. I DM assure you that Hirage Shinsuke will hear of this. Oh, and you dare to utter the commissioner's name. You outlanders have no respect for the rules. Seize the merchants. We will resolve this dispute back at headquarters. नहीं नहीं कोई इशू नहीं Uh-oh. This is going in a bad direction. Gentlemen, come now. Is there any need for this? If there's a dispute to resolve, let's get a drink and talk it over. Who are you supposed to be? And why in my right mind would I join you for a drink? You never heard of the Fixer? Here's my card. Huh. You're from the Yashiro Commission. Shh. Huh. Well, this is Kanjo Commission territory. However powerful the Yashiro Commission may be, you have no business meddling in Rito's affairs. Of course not. Still, perhaps you could show the young... lady of our clan some courtesy. You wouldn't want your name showing up in a petition to the Shogun, would you? That fan, the Shirasagi Himegimi. I don't need any trouble with her. Okay, let's forget all this. It'll give us one less thing to worry about. But, Chief! Enough! We're leaving. Let's get dinner one day soon, gentlemen. My treat, I insist. No response, huh? I suppose that bridge is well and truly burned then. Thank you so much, Toma. But I'm sorry your relationship with the Kanjo Commission had to suffer for our sake. Hey, I was joking. It's a small price to pay, and you're more than welcome. If there's anyone you should be thanking, it's the Traveler. He's the one who found a way to turn things around. If nothing else, I'm sure the tax collection Ashigaru will tread a little more carefully in the future. Shh, not here. Too many people listening. Let's move somewhere else. Corruption seems rife in the Kanjo Commission. They truly are rotten to the core. All right, time for me to answer your questions. What would you like to know? Straight to the point. Let me reintroduce myself. कर भाई कर introduce कर I belong to the Kamisato clan of the Yashiro Commission on Narukami Island. I'm an attendant of the Shirasagi Himegimi. You've been keeping your true identity a secret from us this whole time? So, the Yashiro Commission. Guessing that's another branch of the Tri-Commission? Correct. The Kamisato clan is the head of the Yashiro Commission, who manage ceremonial and cultural affairs. I'd go into more detail on what exactly that covers, but I'm not even sure myself. I'm just someone who was fortunate enough to be taken in by the Kamisato clan. My role is to take care of the daughter of the clan, Kamisato Ayaka, also known as the Shirasagi Himegimi. Seems like she must be super famous in Inazuma, given the reaction of those guys just now. Oh, most definitely. She's graceful, dignified, and kind-hearted, too. The people of Inazuma quite adore Miss Kamisato. Her fame even somewhat eclipses that of her older brother, Kamisato Ayato, despite the fact that he's the current head of the clan.
I suppose those who treat others with compassion earn themselves the same treatment in return. Miss Kamisato's situation certainly seems to attest to that. Take me, for example. I'm just an attendant, and yet she treats me as an equal, as she would a friend. You're asking the right questions, and to be honest, I don't want to keep you in the dark any more than is necessary. Firstly, वेंटी you should गुप्ता know that being a fixer विनीत is गुप्ता not विनीत something you गुप्ता can भाई fake. साहब I वेंटी भाई spent the क्या हाल better चाल part of a month वेलकम बैक सर tirelessly building up my कैसे हो network of स्वागत है relationships आपका on the island, and I got to know Captain Beto during that time too. Still pretty good going for just a month's work. डन क्या डन Well, maybe I have a slight knack for schmoozery, but the main thing was I had to make sure I'd be in time to receive you when you arrived. Inazuma may have closed off to the outside world, but that hasn't stopped a lot of people from hearing about your feats in Mondstadt and Liyue. So, when Miss Kamisato heard of your intention to come to Inazuma, she began looking forward to your arrival with great anticipation. She's excited to find out whether the rumors are true. That is, that you have what it takes to change the tide of the times. Change the tide of the times? In the test I gave you वो earlier, वाला although there were a few hiccups at the end, कंप्लीट हो गया ओके it ब्रो was you who found the way to turn the Fine. situation around. Navigating powerful people, using their character flaws to your advantage. It's just what Miss Kamisato had hoped to see. With your help, even the Vision Hunt decree. with your help even okay That's an unexpected development. Perhaps our sources were misleading. Yes, of course. I completely understand, and as agreed, I shall help set that up for you. Toma sure didn't put up much of a fight. Well, my work on दूसरे Rito का is done. चक्कर So I suppose this is भाई goodbye स्पॉइल for मत now. करो यार अभी मतलब Oh, काफी हैं one जिन्होंने more किया thing. नहीं खेल रहे हैं अभी This ठीक है invitation letter is for you. When you get to Narukami Island, you can find me at the Komori Tea House, as per the letter. Good luck with everything. See you soon. sometimes someone has my IP address Toma's not ये भी such a बढ़िया bad बात है guy, huh? Huh? What's up? Oh, right! Wait, so did Toma forget that too? Oh, darn it! No wonder he was so matter-of-fact about the whole thing. As soon as we हम get सुबह off से Rito, खेल रहे हैं Paimon's going straight to Komori Tea House. अबे to ना settle भाई this भाई score. गाली मत दो यार Well, guess we should give it a डोंट try. यूज सच वर्ड भाई Let's ठीक head है to the लड़कियां हैं border यार and हमारे see पास how और far वैसे we भी ये सब सच्ची में नॉट अलाउड यार मेहमान को खा लो Stop there. Present your travel permits. फैमिली फ्रेंडली स्ट्रीम है नो गाली नॉट ओनली ताली Sorry, but we really gotta get to Narukami Island. It's kinda urgent. इट्स ओके ब्रो इट्स If you don't have a travel permit, this is as far as you'll get. Those are the rules. As expected. Traveler, you gotta think of something. How do we get out of Rito? Are you saying we should go and meet with the Kanjo Commission? Guess it can't hurt to try. ऑप्शन Even नहीं if है नहीं Paimon अभी नहीं has आया a few choice words to say about his subordinates. और भाई मैंने कहा प्रणाम Maybe he's our biggest प्रणाम भाई fan. प्रणाम बट मैसेज नहीं आया मेरे पास सच्ची में नहीं आया प्रणाम ब्रो कैसे हो हाउ आर यू Halt! This is the Kanjo Commissioner's office. No trespassers. We're here to see, the Kanjo Commissioner?
The Kanjo Commissioner seldom entertains Outlanders. Leave now or we'll be forced to... Ah, wait. Oh, Commissioner! These two are honored guests ऐका from मिलके तो बढ़िया है, afar. हाँ, No need to nice. give them the usual spiel. Come on in. Let's see what we can do for you. Did you get all that, mister? Mister? My sincere apologies. Nice. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. प्रणाम राहुल भाई, बैटिंग वाले भैया, लेजेंड भाई प्रणाम। लेजेंड बोल रहा है भाई, लेजेंड। I am Hiragi Shinsuke. So ये भाई सब Kanjo कमिश्नर हैं इनके। Commissioner and head of the Hiragi clan. ओके, It's an हिरागी honor to क्लैन, meet you both. मतलब कांजू कमिश्नर का हेड है ये हिरागी क्लैन का। हिरागी शिनस्यूक नाम है इनका। आई एम टू ऑनर टू मीट यू, खुशी हुई इनको। नाइस टू मीट The यू। reason we wanted to come and see you was because... All right, all in a good time. Two travelers renowned far and wide have shown up to see me, and I should very much like to make their acquaintance. Let's not limit this to business only. So what you're saying is we really are pretty famous. Absolutely. How many other people in the world have what it takes to knock the wind out of Storm Terror's sails and put the overlord of the vortex back under the sea, eh? आज कोई आया नहीं स्ट्रीम पे। Paimon thinks you make an excellent... And कोई क्या I बात, hear you also मतलब fought माही नहीं the आई स्ट्रीम पे। Tuiglot in Liyue Harbor. खेल गेम खेल रही होगी। Even beat one of their harbingers in a duel. Is that true? Whoa, you heard about that too? Yep, it's true, all right. As I thought. Something wrong? No. Rito, is one other thing I heard about you is your great zeal for helping other people. Oh, sure, no problem. Whatever you need, right? Excellent. Well then. You दीदी को must गेम know के that साथ Genshin, 36 कहाँ खड़ा है। a flower, grows सोनल on जी the किधर है भाई? mountaintops सोनल के of बारे में नहीं Liyue. मुझे पता। I have no idea about A it. few of those before. So, you want us to go back to... Yes, bring me 300 Shinsen, would you? Freshly picked. Did Paimon hear that wrong? Too much trouble, is it? I see. राहुल भाई एक बात बताओ मुझे, सुबह अकाउंट दे रहे थे मुझे विश करने के लिए, चलो नहीं दे पाए, नहीं चेंज कर पाए, तो खुद कर लेते भाई विश। क्या लफड़ा हो गया, सीन क्या हुआ? 709 letters ऋषु to भाई be वेलकम टू द precise. स्ट्रीम, कैसे हो, कैसा लगा इनाजुमा एंड ऑल? नो स्पॉइलर प्लीज यार, मैंने खेला नहीं बिल्कुल भी। Terribly sorry. बस ये We're बता just दो a गुड little है, short on वर्थ है people और क्या है? lately. What sort of an explanation is that? अरे इशारे कर रही है वो तो। Traveler, what are we going to do? Should we really help this guy? ले That's the spirit. नाइस। Don't keep me waiting too long now. You're seriously considering taking लीड this कम्युनिकेशन job? ऑफिसर। The terms are ridiculous. बड़े लोग, उंगली मत करो, बड़े लोग तो ठीक है, फिर उंगली क्यों कर रहे हो बड़े लोग बोल के? दिस इज नॉट ए गुड थिंग। बड़े लोग बोल दिया आपने, डेट इज फाइन। व्हाई आर यू डूइंग उंगली? यादव जी, यादव ही पिलर वाला अकाउंट उनका है, तो ये गेम खेल रहे होंगे, मुझे उनके यूआईडी। अरे ब्लर वाला अकाउंट उसी का तो है यार, इतनी बार तो बता दो मुझे। सब तो आप लोगों को मजाक लग रहा है ये? Halt, you two! उसी का है भाई ब्लर वाला अकाउंट। What did we do?
I would not spoil the story for you, but I can confirm it's damn good. I loved it and I am sure you will enjoy it. बस ठीक है भाई, थैंक यू। इतना ही मतलब होना चाहिए। मुझे टाइम नहीं लगा यार इस सब के लिए। तो मेन वाले गांधी वाले अकाउंट में तो मैंने जल्दी स्किप करके थोड़ा सा कर दिया था, फिर मुझे जाना पड़ा। अभी तो आराम से बैठ के मैं रात भर इसको कंप्लीट करूँगा, चाहे अकेला रह जाऊँ, कुछ भी हो, नो इशू एट ऑल। चिट्ठी आ गई। हाँ, लड़की ने चिट्ठी भेजी। आज आपकी वीडियो ने साथ दिया। अरे मैं भाई गेमर वाइटी, मैं ना बना देता यार ऑलमोस्ट। मैं सोच के गया था, मैंने मॉर्निंग में स्ट्रीम बंद करके ये सोचा था कि जो भी वर्ड क्वेस्ट हैं, पजल्स हैं, साइड क्वेस्ट हैं, उन सबको क्लियर करके उनके ऊपर वीडियोस बना दूंगा। वो मैं कर रहा था, बट मुझे सडनली ना जाना पड़ा, तो 4-5 घंटे मैं बाहर ही रहा इसकी वजह से। अरे मेरा मैसेज नहीं आया, 2 सेंटेंस भर के लिखा था, नहीं आया भाई, बिल्कुल भी ना आया। मोहित भाई, अयाका के लिए कोई अच्छा पोस्टर वेपन तो बता दो। वो यूज़ कर लो, ब्लैक लिफ यूज़ कर लो, और नहीं है कुछ तो ब्लैक स्वॉर्ड यूज़ कर लो। नहीं इरिटेट हो, हाँ नहीं आया भाई, नहीं आया, सच्ची में नहीं आया। लड़की बुला रही है भाई, कोने में आओ कहती, और रात को बुला रही है, वैसे भी गलत बात। मैंने वही क्वेस्ट करा है। मैं तो कोशिश करूँगा, अगर ये यहाँ से इस क्वेस्ट से जल्दी से मैं फ्री हो गया तो आज रात को पेल दूंगा फिर सब कुछ। स्पीड रन करूँगा उसको आज। याद कौन चाहिए। सो बेसिकली दिस इज जापान ना, इसीलिए ऐसे नाम है इनके लोगों के, शक्लें ऐसी हैं। मेरे पास फ्लूट है। फ्लूट तो यूज़ कर सकते हो, एंड आयरन ब्लैक लिफ वाला बाय कर सकता हूँ। मेरी शु भाई बता रहे हैं इनको, ये बढ़िया बता रहे हैं। It's a pleasure to see you again. Wow, she's a daughter of rank. You can nice. No need to be so formal. भाई मैं ना ये आप लोगों को अच्छी लगती है ये बोलती, भाई मैं यार मुझे सीरियसली मुझे इरिटेशन होती है इसकी आवाज़ सुन के, पता नहीं भाई मेरा टेस्ट अजीब है या समथिंग लाइक दैट। Discuss what? I should like to ask for your help with delivering a letter. Yes, definitely. Like father, like daughter. Paimon is irritating. Paimon is irritating me. No, you misunderstand me. Please, allow me to explain. I was hoping that you could deliver a letter to Narukami Island in my stead. It is to be given to Kujo Kamaji of the Tenryou Commission. My father has always forbidden me from communicating with him. He knows that there are prospects for my marriage that would better serve him politically. But my heart is with Kamaji. There is no one who would dare defy my father's will on Rito, but you are Outlanders. Outlanders seeking to get to Narukami Island. ये तो love story चल पड़ी भाई. It would be regrettable to let such an opportunity pass. Oh, Paimon gets the whole picture now. Of course, in doing so, I will also do everything in my power to help you leave Rito. That is my promise. To be perfectly honest, as long as you remain in Inazuma, my father will have no intention of letting you leave Rito. Yeah, we figured as much.
It was pretty obvious he was just trying to hold us up. Inazuma में मुझे अभी तक 2300 I पैरामीटर्स मिल secretly चुके हैं. ओह overheard a नाइस, ये तो बहुत conversation बढ़िया between भाई. my father and a very arrogant-sounding woman just a few days ago. They seemed to be discussing how to keep you here on Rito. In fact, it was the first time I had ever heard my father speak so respectfully to I'm too someone who wasn't the inconsistent shogun. waving great. चल भाई, कौन बंदा पप्पी का देवता बना जाएगा? बिल्कुल भी नहीं. और रोशन तो कभी भी ना बोले, ऋषभ तो कभी भी ना बोले कि हाँ मैं ये सब करूँगा. कभी भी नहीं भाई, नेवर एंड एवर. ऋषभ तो बोल देगा हाथ जोड़े भाड़ में ही गया तेरा चैनल भी और तू भी. ऐसी हरकतें तो मैं जिंदगी में ना करूँ. रोशन सही बात है भाई, पप्पियों का देवता बनने का किसी का विचार नहीं है भाई. सच्ची में हर कोई बंदा यही कहेगा कि ना भाई. Hold on, please. These goods are being कुछ sent तो गड़बड़ है पप्पियों का. Watatsumi Island? पप्पी यही क्यों दिखती है? ऋषभ भाई वो तो मेंटेनेंस और प्रोमोशंस. My lady, this is an unexpected honor. You are correct. These goods have been repeatedly requested by the Kanjo Commissioner. We must be certain that they reach Watatsumi Island intact. Is there something wrong, Lady Hiragi? No, as you were. My father Very simply nice. has some concerns of the shipment's safety and has ordered that myself and an additional qualified My lady, you aren't suggesting that you intend to escort the shipment personally, are you? There's certainly no need for you to trouble yourself with such a matter. And as for this qualified escort... Please, do not cause us any further delay. If memory serves me right, my father has already asserted that this shipment must arrive on time. Yes, of course, my lady. It's just that, well, we don't know who this... Now, need I remind you of the penalty if anything were to happen to me en route? I'm sure you are all quite familiar with my father's temperament. Do you really presume that you can fully guarantee my safety on your own? Boy, Chisato can talk the talk. रोशन भाई छोटा सा मजाक था वो. बहुत अच्छा. Basically every parameter Yes, is my received lady. after Very update well then. excluding 90. It's an honor to have I you get from accompanying us. Belkin. Your Shinojo, you can't really be agreeing to this. Well, the request is from Lady Hiragi herself. It is our duty to serve her in the utmost capacity. Yes, but that's not... Well then, if we're through here, I suggest we set off at once. Dawdling will only allow potential thieves more time to prepare now. Yes, my lady. You heard her. There's no time to lose. My lady, please stay back. We'll handle it. Not as well Oh, as you finally would, fight. Red. Nice. Teamwork is dreamwork! Monsters sighted. Prepare to counterattack. Protect Lady Hiraki at all costs. We'll take care of this. Stay with Chisato. मोहित भाई इन सब के नाम सुन के बड़ी हंसी आती है. कतई जापानी वाली फीलिंग आती है. ये तो बहुत खुश होंगे भाई इसको खेल के. मैं वही बोल रहा था. More monsters inbound. Lady Hiraki, stay close. To move. You're open. Everybody stand back!
Burst forth! This is order! Back off! भाई डू इवेंट कल आएगा भाई? देखो अभी राइट नाउ ना आई हैव नो आइडिया अबाउट एनीथिंग। मैं जस्ट अभी गेम खेल रहा हूँ, ये कंसीडर कर लो। बाकी रिशु बता देगा अगर We can take जो refuge भी in the आपको village up डाउट ahead. होगा। How are you faring, my lady? I'm perfectly all right. You may stop here. The road to Narukami Island is just over there. In my letter, I've requested Kamaji to grant you a special travel. My lady. So that's how it is. I had a feeling something was amiss, but Shinojo, you... No, Lady Hiragi would never hide anything from us, I'm sure of it. But who is this Kamaji you speak of, my lady? I'm not afraid to say that he's the one I love. The one you love? Shinojo, did you honestly think... What? No, I was just clarifying, that's all. I would never in my wildest dreams, You two needn't worry. Please, forget that this ever happened. If my father catches word of it, I alone will be held accountable. Yes, of course. As you wish, my lady. But what will happen if you're out? Don't fret. My father has always been one to spoil me. The worst he'd do is sentence me to half a day without food or something to that effect. Huh. Paimon never I wish you a safe journey. Bye, Chisato! भाई जिसे Come now. Quit your staring and let's get moving. We've got goods to shift. all right. सेंटी होगा छोरा मुझे लग रहा है। सेक्टर्स पूरा फेवर। तो जोंगली का बिल्ड देख ले मेरे भाई। 31,000 का एचपीएस का, 14,000 का अटैक है, 48 की क्रिट रेट है, 179 का क्रिट डैमेज है, एनर्जी चार्ज 123 है एंड 90 का इसका जियो डैमेज है। ठीक है ना। वेपन इसके पास डेथ मैच है एंड आर्टिफैक्ट्स में पैट्रा एंड ऑब्लिग है, C0 है एंड यहाँ पे 10-8 3 विशेस। पहले मैं मेन यही करूँगा, है ना। वर्ड क्वेस्ट एंड ऑल तो सब बाद की बातें हैं। न्यू आर्टिफैक्ट देखे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं देखे। मैंने जस्ट इसमें अभी पजल्स वगैरह ही देखी हैं अभी तक, और उसके बिना मैंने कुछ भी ना देखा ढंग का। यार वर्ड भी नहीं ओपन किया मैंने तो हद ही हो गई, मतलब क्या ही बात है, ऐसे ही घूम रहे हूँ। कल ही आएगा, अभी गूगल करके आया हूँ। अच्छा गुड नाइट, कल आता हूँ। ओके ब्रो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। जो रेजोनेंस की वजह से इतना जाता है डैमेज, फिर मेरा 150 जाएगा ना, मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया। मुझे आपके बीट का आइडिया नहीं है ना। मेरे पास अयाका है, उसके साथ शिंचू यूज़, और बढ़िया कैरेक्टर बताओ। डायोना यूज़ करो, बाकी जो फोर्स सपोर्ट है उसमें सबको ट्राई करके देख लो, एक एक बार ट्राई करो, प्रैक्टिकली यूज़ करके देखो। बैनर को यूज़ करो, जोंगली को यूज़ करो, बैंटी को यूज़ करो, सब में कोई ना कोई दिक्कत है।
आर्टिफैक्ट एक्सचेंज ट्राई करो ना। अबे कैसे करूँ अभी, अभी तो मैं ये ओपन कर रहा हूँ। देखो यहाँ हालात ये हैं कि जस्ट इसको ओपन कर रहा हूँ। टेलीपोर्ट क्यों नहीं करने दे रहे, ये भी गलत बात है। और आई कैन से यस बिकॉज सीक्रेट बात तो ये है कि भाई होंगे कि मेरा एल्बिडो एल्बिडो नहीं है। बट मैं नहीं कह सकता यस, क्योंकि आई हैव नो आइडिया कि आपका बिल्ड किस तरह का है। सो 150K के जाएगा या नहीं जाएगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। रोशन अंतर्यामी है, वो समझ जाता है बातों को, मैं नहीं समझ सकता ऐसे। बट आई रियली लाइक द रीज़न, माहौल यहाँ का, एरिया अच्छा है भाई, बढ़िया बनाया, बढ़िया। आयाका रिव्यू नॉट येट। एजिल भाई मैं अभी कुछ खास किया नहीं हूँ। देखो अभी ऑर्गन क्वेस्ट करूँगा पहले, इतना करने के बाद फिर मैं गेम में आऊँगा। पहले लेट मी प्ले द स्टोरी, किस लेवल की है, कहाँ तक जा रही है, क्या कर रही है, सब देख लें एक बार, अच्छी है या क्या है। मैंने मेन अकाउंट पे खेला है वैसे, बट स्किप तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैंने क्या किया। गानियों से कंपेयर ही करना, गानियों से कंपेयर करवाऊँ, ऐसी बातें मत किया करो। गानियों को नहीं बीट कर सकती पर वो, बिकॉज गानियों है। नाइट करो, वो काफ़ी बढ़िया लगेगा। अच्छा नाइट का टाइम करूँ, हेलो सर, जैसा आपका हुक्म। कस्ट अच्छा है और लंबा भी है। ये लो सर, नाइट कर लिया। गो टू कमोरा कम्युनिटी हाउस, मतलब जगह के नाम भी याद रखने पड़ेंगे ना। पहले जब हम थे वहाँ पर थे रीटो में, और अब हम हैं ये कौन सी जगह है, कोंडा विलेज, नहीं पता नहीं भाई कौन सी जगह है। कम्युनिटी हाउस, नो आइडिया। मैं टेलीपोर्ट्स क्यों छोड़ रहा हूँ वैसे, बाय द वे, जब मेरे आसपास हैं ये, देन आई शुड डू इट ना। भाई मुझे प्रॉब्लम ये होती है, सबसे पहले तो मैं सारा एरिया ओपन कर लेता हूँ, फिर बात आती है उसको खेलने की, करवाने। पहले खोल लो चीज़ को फिर करो। भाई अयाका और गानियों का कंपैरिजन नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता। मेरी स्ट्रीम पे तो नहीं हो सकता, मैं तो नहीं कर सकता, और ना मैं किसी को करने दूंगा। जो करेगा मैं उसको टाइम आउट दे दूंगा 5-6 साल के लिए। To the letter, And this should be the place. Sorry, we don't serve the general public. Wait! We're at the
general public. Well then, you must be a couple of wandering outlanders that snuck into the nation, judging by your attire. Are our clothes really so... what, Paimon? The Yashiro Commission's seal. This must be from Mr. Toma. It seems there's more to you than meets the eye. In which case, welcome to the Komore Tea House, a safe haven for the Yashiro Commission. Okay. Well, that sounds more like it. भाई 1 बजे तक ये मेरा आर्कोन वाला क्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगा इस स्पीड से, ये बता दो मुझे। अगर नहीं होगा तो भाई मैं थोड़ा सा क्विक कर दूँ, इसको स्किप कर दूँ। अगर हो जाएगा तो गुड है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है इसमें अभी स्टोरी में। सो आई रियली वांट टू नो स्टोरी ऑल्सो। अगर 1 बजे तक नहीं होगा मैं एक बजे स्ट्रीम बंद कर दूंगा। अगर 1 बजे तक नहीं हुआ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है फिर तो बाकी कल सही है। अदरवाइज ये भी सही है, गुड है। Paimon doesn't see him anywhere. Do you think he forgot his promise to me? Who forgot their promise? ओए डॉगी आ I गया, was डॉगी। beginning to think you'd forgotten about me. What? But Is that dog talking? Relax. No need to look so surprised. I take it this... Huh. So you didn't see anything like this when you were in Liyue Harbor? Now that you mention it, this does Ayaka suddenly हो seem less जाएगा, out of the यूं नहीं। ordinary. All right. I've had my fun. Hey, you're this close to getting an ugly nickname, mister. I just want to complete Well, I've Archon had some quest. time to kill, स्टोरीज की given जरूरत that I've नहीं है been मुझे waiting here स्टोरीज for की। आई you रियली for so डोंट केयर long, अबाउट इट येट। as was the case in मतलब retail. आयाका की स्टोरी So एंड I योइमिया came की up with this स्टोरी के little बारे में fun भी greeting इतना for मुझे when you कंसर्न arrived. नहीं है। But in अगर all स्किप करोगे तो seriousness, योइमिया I का would क्वेस्ट like to होगा। स्किप नहीं करना apologize यार। आई about रियली that वांट little टू test you went through earlier. एंजॉय द स्टोरी, Though it was quite necessary. बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट It आर्कोन helped us क्वेस्ट ओनली, determine नॉट whether स्टोरी or क्वेस्ट not ऑफ to bring आयाका you एंड before योइमिया। Miss Kamisato, and whether you had the courage to face the lightning alongside us. Don't think that Paimon's gonna forgive you just because you're getting all serious now. Sorry, did I overdo it? My apologies. Let me just say this. You've हो often जाएगा ना, found yourself ठीक है। skirting the rules from the very beginning, haven't you? Naturally, this is due to your unwavering and resolute determination. A long time ago, we had a friend who was much the same. But when the lightning योइमिया struck... शो के तो भाई ऋषु भाई योर भाभी इज अराउंड। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता बट शी इज, समझ गए ना, अलग लेवल की, नेक्स्ट लेवल की चीज़ बना दी इन्होंने, नेक्स्ट लेवल की। 2-4 मिनट के लिए हम थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाते हैं आज, बट क्या बताऊँ, क्या ही बताऊँ अब मैं कुछ बोल नहीं पाता यार उसको देख के कभी कभी। आपको जब आप पुल करोगे तो वहाँ पर आपका इंटरेस्ट बता दिया मैंने। एजियल ब्रो, ये जब ऋषु भाई ने बताया ना कि योइमिया इज सो क्यूट तो मैंने बता दिया अपना इंटरेस्ट। गेम प्ले में भी इंटरेस्ट है, उसमें भी इंटरेस्ट है मुझे, तो मैंने बता दिया वो कि डेफिनेटली मैं उसको पुल करूँगा, चाहे उसको पुल करके मैं रख लूँ। क्या हुआ क्या बताऊँ मैं बस क्या ही बताऊँ अब मैं। मोहित भाई ये उम्मीद आपसे बिल्कुल ना थी, कभी कभी हो जाता है भाई, क्या करूं। सो मुझे धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है, आप समझ जाओ अभी व्हाट आई मीन टू से। बाद में मैं काट दूंगा इसको, इस बात को। So you've heard of his story. His light still burns all the more brightly. इनको ऐसे कैरेक्टर्स नहीं बनाने चाहिए वैसे, सच्ची बता रहा हूँ मैं। इंटरेस्ट, ये देखो आ गए आग लगी हुई है, घी का कटोरा लेकर आ गए, दिल जीत लिया मैंने सही में। Yes, of course. I will bring you to the Kamisato residence where the Yashiro Commission फिर is भाई आज गलत located. रास्ते जा रहे हो। नहीं मैंने भाई But देखो before that, there is one किसी other का place I मैसेज was नहीं था, hoping you both would accompany सिर्फ me ऋषु to. का मैसेज था। मुझे लगा जस्ट ऋषु इज हियर ओनली, तो मैंने I would like you to come वैसे with बात me कर to ली कि the भाई ऋषु statue के of साथ the पर्सनल बात omnipresent करना हूँ। god. It's मुझे क्या still पता under भाई आप सभी construction बैठे हो now, but you can already see और it from सुन रहे हो। practically anywhere on Narukami Island. तो ये आप मतलब अचानक से निकल आए ना सभी। सर योइमिया, हाँ योइमिया की बात कर रहे हैं, योइमिया।
मैं बस ये कह रहा हूँ कि दे आर डूइंग वेरी रॉन्ग थिंग। इस तरह के मॉडल्स नहीं बनाने चाहिए, इनको इस तरह का कैरेक्टर नहीं बनाना चाहिए। दिस इज़ रॉन्ग, बहुत गलत बात है ये। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इनका ये बिहेवियर, इनका ये सिस्टम। गेम है ये, मार धाड़ होती है, काट कटैया करते हैं वो, ठीक है, धनुषधारी हैं एंड ऑल हैं, तो दीज थिंग्स आर नॉट गुड। भटक जाते हैं भाई इंसान, आखिर इंसान ही है हम भी। भाई कहाँ जा रहे हो ओमनी प्रेजेंट गॉड। हाँ, सब आराम से स्टोरी एंजॉय कर रहे हैं। हाँ करो करो, मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ स्टोरी, धीरे धीरे हौले हौले। भाई लोकेशन बहुत बढ़िया यार ये, वैसे ना बहुत अच्छी बनाई है यार इन्होंने, रियली लाइक इट। पैसा कमाने के लिए, हाँ ये भी बात सही है यार, पैसा कमाने के लिए। संस्कार नाम की चीज है कि नहीं? संस्कार नाम की चीज तो बहुत है। मैन विल बी मैन सर, ये बात है, सच्ची बात है। जैक फ्रॉस्ट भाई धीरे धीरे बोला था मैंने, रीशू भाई के कान में बोला था, बड़ी धीरे धीरे अपना साउंड स्लो करके हौली हौली धीरे धीरे बोला था कि किसी को सुनाई ना दे, मेरी आवाज बाहर तक ना जाए कि मैं ऐसी बात कर रहा हूँ या कुछ। Before I try to explain, I should perhaps remind you first that Mondstadt is the city of freedom, and Lea is the city of contracts. As for Inazuma, it's known as the nation of eternity. The Raiden Shogun is both the nation's most powerful ruler भाई and its deity. जब वो The eternity ऋषु भाई उसकी एंट्री ना, जब वो मतलब क्योंकि मैंने मेन अकाउंट से स्किप कर करके मतलब पूरा कंप्लीट नहीं किया मैंने उसको, थोड़ा सा ही खेला था मैंने मेन अकाउंट से, तो थोड़ा सा ना सर। The Shogun wishes to keep Inazuma in stasis, आपको सीरियसली allowing the एनालाइजिंग stream of हाँ time to बिल्कुल। flow from one end to the other तो without जब वो जो उसकी disturbing एंट्री it है for ना, all जब वो time. आती है वो पीछे खड़ी होती है, आवाज लगा रही होती है, जब वो Of फिर course, बात this is करते हैं, my जब own limited understanding. उन्होंने कैमरा ही As ऐसे for the बनाया ना reason उसके ऊपर। behind the recent Vision Hunt decree, perhaps the Shogun believes that visions grant people the power to change, and that her eternity doesn't allow for such instability to exist. Whatever the case, the fact is that the Raiden Shogun has dispatched the Tenryo Commission to scour the nation for visions, embedding each one in this statue. And this statue of the omnipresent god can be seen as Inazuma's symbol of eternity. But if that's the case, wouldn't you say that the Raiden Shogun is being, oh, I don't know, बहुत बुरा का मन भटक गया। Only मन में लड्डू outlanders such फूटा। as yourselves would बस ever dare speak out so बस directly बस बस against the खत्म, बात Raiden खत्म। Shogun. गान्यू And हैज ए yet, कंपटीशन I नाउ। agree. हाँ, The Vision Hunt decree गान्यू के is लिए something परफेक्ट that कंपटीशन हो simply गया। should not exist. लड़की का And चक्कर Miss बाबू। Kami ऋषु भाई Sato has been सच्ची बताऊं, committed to एक fighting बात it since बताऊं the और बात day it बताऊं, was पता announced. है सची कंट्रोल कोई और भी बैठा है यहाँ। हाँ मुझे लग रहा है, मैं एक बात बताता हूँ, अरे वो छोड़ो बातें, एक मैं और बात बताता हूँ कि मतलब इम्पैक्ट, ऋषु भाई इम्पैक्ट इतना था कि सर 11 विशेस किए हैं आयाका के ऊपर, 10,000 प्रेमोजम्स पड़े हैं, हर रोज बोलता था क्रायो सुपरमेसी, क्रायो सुपरमेसी, ये वो सर बढ़िया होगी, डैमेज करेगी नहीं करेगी मुझे नहीं पता। उसको मैंने विश नहीं पुल नहीं किया, अभी 11 विश करके छोड़ दिया कि बस बाकी बाद में देखेंगे, क्योंकि इरादे बदल गए सर मेरे। अब मुझे सब पूछते हैं योई में विश कर ली, मैं आयाका विश कर पुल कर ली, मैं बोल देता हूँ कि हाँ ठीक है देख लेंगे बस। ओ नानियों के लिए कंपटीशन, टफ कंपटीशन है सर, नॉट ओनली कंपटीशन हियर, टच द statue and then what I Aspirations? Aspirations. That would seem to confirm the saying. Have you heard it before? That when a person's ambition reaches a certain strength, the gods look upon them with जिसे हमें border लगता है। That is where visions come from. In other words, a person's vision represents their ambition. So if what you just said is true, then the ambitions of these people are stronger than I imagined. जल्दी F2P का स्टेटस हटने वाला है, मुझे लग रहा है ये हट जाएगा। आज ही सोच रहा था मैं कि देखो अब मैं पता कहाँ पे आ गया ऋषु, में अब ये सोचने लग गया कि चलो यार एक अकाउंट तो मतलब मैं, जब बंदा स्ट्रीमर है ये सोच के बैठा है कि भाई मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ या कुछ है, तो अब मैं ये सोचने लग गया कि एटलीस्ट एक अकाउंट तो ऐसा होना मांगता है ना जो मतलब पेड हो या ऐसा। All right,
Time for the next stop on our tour of Narukami Island, the Kamisato residence. Finally! भाई नो व्यूअर्स हैं आजकल की दुनिया। ओके, ये भी सही है। बट मेरे मंसूबे कुछ और हैं अभी, और मैं बता चुका हूँ। मेरी इंद्रियां कहीं और जा रही हैं। यही होता है, वही स्लोली स्लोली पैसे पे बात आ जाती है। मतलब घुमा फिरा के सब कुछ पैसे पे ही आ जाता है। ये भी सही है, ये भी सही कह रहे हो यार। मजबूरो हर नई चीज़ बढ़िया लगती है। चीज़ नहीं यार, चीज़ वाली बात नहीं है। नानी के मैंने गलती से बना दिया था, उसके ऐसा ब्रोकन करेक्टर शायद कोई आए फ्यूचर में नहीं आ तो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, उनके लिए चुटकी का खेल है यार बनाना। उनके लिए चुटकी का काम है। जब जोंगली आया था ना, वो भी मजाक था। अब देख लो भाई क्या है वो। इस वीडियो पे रीवर्क कर रहे हैं वो, देखिए उसको भी। होने दो उसको थोड़ा सा सही, वो भी बताएगा। मुझे लग रहा है मैं थोड़ा ज़्यादा स्लो खेल रहा हूँ इसको। 11:30 हो गए हैं ऑलरेडी, बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे तो मुझे लग रहा है ये। थोड़ा क्विकली करूँगा। मैं इनके चक्कर में पड़ जाता हूँ। ये टेलीपोर्ट्स बाद में बड़ी दिक्कत होती है यार। आज के बाद टीम पे किसी ने बोला कि योइमे इज माइन, मोहित ब्रो विल इंस्टाग्राम। वार्निंग दूंगा भाई मैं, पहले ऐसा मत बोलोगे। मतलब अब संभावनाएं चेंज हो रही हैं, हालात बदल रहे हैं, मुकद्दर बदल रहे हैं, मौसम बदल रहा है। ज़्यादा पूरा आराम से खेलो, 40 दिन है फॉर नेक्स्ट अपडेट। हाँ यार आराम से ही खेल रहा हूँ मैं सच्ची में। मैंने रिशु नए मेन वाले अकाउंट पे ना स्किप कर करके जल्दी ख़त्म करके वो अब सोचता हूँ कि मतलब मज़ा भी नहीं आया उसको करके। ख़त्म तो नहीं किया, आई थिंक एक्ट 1 कंप्लीट कर दिया मैंने मेरे ख्याल से वहाँ पे। Place where the big shots of Inazuma live. Welcome at last to the Kamisato residence, honored guest. Miss Kamisato is delighted to finally meet you. Is this the Shirazage Himegimi you keep going on about? So... Oh, behind the screen? Yes. As the daughter of the Yashiro Commission, this is how Miss Kamisato is accustomed to receiving guests. Consider it a time-honored tradition within the Yashiro Commission. Makes sense. She's a super... Please forgive my lack of courtesy for receiving you in this fashion, especially following such a long and wearisome journey over the sea. I have awaited your arrival with great anticipation, and Toma assures me that you do indeed possess the power to change the tide of the times. At present in Inazuma, in the name of the Vision Hunt Decree, the people's aspirations are being senselessly trampled underfoot. Though the Yashiro Commission serves the Shogun, it is the people with whom we share close bonds, given the contact we are required to have with them in the performance of our duties. A commission's power rises and falls with the trust of their people. Thus,
We cannot remain indifferent to this situation without Traveler. Lend us your power, and we can... सबसे बड़े प्लेन वो तो मिल जाएंगे, वो मैं बना दूंगा, पूरी वीडियोस मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। See, milady, it's just like I said. एरिया एक्सप्लोर करने This में, will take वर्ड us क्वेस्ट nowhere. में, कोई भी चीज़ फाइंड आउट करने में, इन चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। मैं हर चीज़ की गाइड बना सकता हूँ। Please, don't go. I will introduce you to the Raiden Shogun on one condition. You must fulfill 3 small wishes on my behalf. What are your wishes? They pertain to 3 whose visions were taken from them. Perhaps once you've met them, you will मैडम वो understand. कैसे हो? बिल्ली बन गए आगे फिर से? A warrior who guards a village, a former samurai who helped carry out the Vision Hunt decree, and a swordmaster determined to become the best in the world. Does Paimon get that right? Correct. Please do all you can to help them. I will await your return here. Then you have my gratitude. I'm sure you'll do great. कौन सी बजा दो जी? अभी जो पानी बोलते हो? मेरे पहले को नहीं पता। Let's see. Where's the person Ayaka told us about? Oh, लाइट गई। Why are you doing this? Why leave all of a sudden, after all these years? Precisely. It's much too sudden. We've had no time to prepare. The children are desperate for you to take them out to play. Please, we urge you to reconsider. That must be the guy Ayaka told us about. Let's go over and see. ये तो मुझे पता तक नहीं है ये क्या सीन है उसका। आस्क द क्राउड, 2 तो बनते हैं, क्राउड क्यों बोल रहे हैं? If you want my opinion, something to do with the Vision Hunt decree. It's clear that Taijima had done nothing wrong, and still they confiscated his vision. After that, he became a completely different person. I can't claim to fully understand it, but I could tell that he'd lost something very important to him. He went off on a walk, alone. Sir, truth be told, we aren't sure whether trying to keep him here is the right thing to do. But equally... Seems like he's a well-respected guy around. We can't let him leave while he's in such a bad... Ah, you must also be here to try. Taijima has protected this place ever since he arrived here 30 years ago, keeping out the treasure hoarders, fending off any monsters that draw near, resolving quarrels between the villagers. He has put an enormous amount of work into looking after this place, and we all think the world of him. But now, all of a sudden, he says he plans to leave us. We will gladly apologize if that's the... You must be Taijima. So what's made you want to up and leave all of a sudden? Me? It's not a question of why I want to leave, but a question of what reason I would have to stay. True, but that's not why I chose to stay here.
And what made me want to come here 30 years ago? And why have I never wanted to leave in all that time? I don't have answers to those questions because I can't remember anymore. Ever since they took my vision away, it's like a slice of my memory is gone. In the past, I knew I wanted to stay here. But whatever resolve I had then, it's gone now. Okay. Well, in that case, if we help you rediscover the reason you chose to stay... But if you can't Oh! Maybe if you just try a little harder to remember, then... Oh, that reminds me. Last time I brought Tejima some fruit, I do believe I saw him writing in a diary. I keep a diary? If you say so. Oh, yes, you do. And what's more, I remember you saying at the time that you... Perfect! So if we want to keep Tejima from leaving, we just need to find a... If you don't mind, we will leave you to find the diary. We should head back to the village to inform... कहाँ चले गए रोशन ब्रो? चले गए होंगे रोशन ब्रो, तो 11:30 हो गए, निन्नी टाइम हो जाता उनका. One day, I'll be as great as Ryuji. This looks like Tejima's diary, all right. Let's see what we have here. Today, the villagers and I got together to cook dry braised salted fish. Today, I helped rescue a kid who had fallen in the water. After I went kite flying today. The string broke, so I chased after it as fast as I could. I soon realized I was never going to get it back. So I just found somewhere to sit and watch as it flew क्रॉस away के भी into the चांसेस हैं ना वैसे. Seems like your average diary of daily village रश life. कर रहा हूँ. करो करो भाई करो. Wait, I went to pray at the shrine again today and stayed there a while. The Omamor... Now that's the kind of info we're looking for. Time to... मुझे मेरे मेन अकाउंट में चाहिए यार, सच्ची में. सुक्रॉस अब वेंटी की तो मतलब मोना की तो इच्छा खत्म कर दी मैंने. So this is the Omamori Tejima wrote about. Interesting. Looking at the color and the design, Paimon would have thought it belonged to a child. But anyway, if he had this with him all the time, there's a chance some of his elemental energy remained on it. Do you think that it might come in handy? You use elemental energy. बाल के बाल रेंडर हैं. Tejima visited a lot. The soil looks like it's been disturbed. Maybe Tejima buried something precious here. Something that kept him in the village all these years? अयाका के साथ Must be something pretty amazing if खेल it के made देखा him गया. stick हाँ around खेल के for देखा था 30 मैंने. years. Let's dig it up and take a अच्छी look. है, काफी अच्छी है. It looks like बट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वहाँ पे शायद नहीं आ रही वो. paper's gone yellow. Must have been written a really long time ago. They Konda become Village. separated during bar. Sounds so familiar. Where is that place again? Huh. So the reason Tejima came here was to wait for someone. But he's been here for 30 years. Oh, guess they didn't show up in the end, huh? Well, let's go give Tejima his stuff back and take it from there. Well, I'll be. That's certainly my handwriting.
And I guess the Omamori and letter belong to me. But still, it's clear that over the years, I must have made a note of anything interesting. Anything that I could share. And just look at all the things that did happen over the years. How could I have forgotten something so important to me? Now that I think about it, love, regret, everything I felt for her, guys, it's all disappeared. and Mohit bro, Discord में चिट चैट चेक करो. ओके, मैं थोड़ी देर में. ओके. पेन ऋषि भाई, आप तो सेव कर रहे थे ना स्टैंडर्ड बैनर, फिर भी पेन है यार सच्ची में. That is nothing to say. Not especially. After all, I've forgotten who she was. Her face, it's as if she'd never been in my life to be. I think, although, what if she were to turn up eventually? When I think about it like that, how curious. What? I shall remain here and keep. Tejima seems to be dealing okay. Seems it's just like Ayaka and Tomo were saying. If you lose your vision, you lose all your hopes and dreams too. That certainly explains the state Tejima was in earlier. At least we were able to help him, weren't we? Well, let's go find the next person. According to Miss Kamisato, the second one who lost their vision is a samurai from the Tenryou Commission. वर्ड क्रैश तो काफी आए हैं ना इसमें. फोटो नाइस. When stuck on a deserted island, rain is a precious source of drinking water. There's none. They say the Tenryou Commission is directly controlled by the Shogun. They're the ones responsible for maintaining law and order in Inazuma. The ones actually enforcing the Vision Hunt decree. Okay. But why would they take action against one of their own? Paimon doesn't get it. Huh? There seems to be some commotion over there. Let's go see what's happening. I'll ask one more time. Do you intend to withhold this month's emergency provisions? The entire clan is counting on that food. We demand an explanation. How many times do I have to say it? I don't know anything about emergency provisions. You dare deceive us? Those provisions are essential. Do you understand? Not some goods to be pocketed by greedy samurai. You samurai think you can just do whatever you please? The Tenryou Commission will hear of this. Oh, huh? And who are you? One of Kurosawa's gang, no doubt. What? We just happened to be passing by. We heard the commotion and came to see what the matter was. I see. You seem to have come just at the right time. Perhaps you can help us settle this matter. This is Kurosawa. He's a samurai and a member of the Shogun's army. भाई गेंशिन पे इंडिया सुमेरु में झलक दिखने के चांसेस हैं हमें. In the past, we'd simply ask him for provisions and everything would be delivered. Now,
he suddenly refuses to give us anything. He's keeping the provisions for himself. I just know it. We'll starve without them. No one seems to care about us. We used to think Kurosawa was a kind man, but he's shown his true colors. He's the same as all the other samurai. It's no wonder all the visions have been confiscated. The Raiden Shogun doesn't need people like him helping her rule the nation. This must be one of the people Ayaka asked us to help. But why would she ever want us to help someone like him? Maybe we should talk to Kurosawa. I've never even heard of these emergency provisions. I don't know whether it's rumors or whether they're trying to blackmail me. But either way, it's ridiculous. If I was hoarding supplies, would I still be the poor man I am today? My own family can barely get by as it is. No, if you'll excuse me, I've got other matters to attend to. And that's the first bit of truth I've heard all day. The Shogun's army told me I was unworthy of my vision. And they said I was slacking off in my work. Apparently, I'd even disappointed the Raiden Shogun. That's why they confiscated my vision. Well, that's strange. You were helping enforce the Vision Hunt decree. Why would you be unworthy of your vision? To be perfectly honest, I don't seem to remember the details. All I know is that I would perform certain things every month. But I don't recall what they were. And it's not just that. I have this unsettling feeling. Does it have to do with the missing I didn't take any. Like I said. To top it all off, my house was just raided by treasure hoarders. Which is why I came here in the first place. I was chasing after them when I got held up by these two. If you don't believe me, go find the treasure hoarders yourself. Huh. You see, but we better confirm. Look, we should be able to follow their tracks. We really outdid ourselves this time. All those samurai houses packed with goods. We really hit the jackpot. I mean, besides that one. You haven't seen anything yet. There'll be a lot more where this came from. Today's just the beginning. I'll be leading you all on an epic journey of pillage and plunder. You demand, boss! These seem like the treasure hoarders we're after. Let's... Funny enough. Another test subject. Stabilize! You're open! बस मैं मेरी रिक्वेस्ट सुनोगे हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं आप लोगों की बात भी सुन रहा हूँ बताओ मैं थोड़ा सा स्टोरी में इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहा हूँ और कुछ नहीं है बट आई एम रीडिंग मैसेजेस आल्सो यार Yeah, but Kurosawa. So he's the one who's... So what is... Food supplies. I didn't want anyone up, but now that you've... You've got a deal. Huh? What the... There's nothing in here but IOUs! Yeah. And they all seem to be made out to the owner of a general goods store. We better talk to this miss. As for you guys... Yes, of course. So, we redeemed ourselves for some IOUs. Does that mean we broke even? Shut it. Let's just get out of here. Treat the well meaning well. Nice. डिस्क्रिप्शन में अपने पीसी की डिटेल्स डाल दो कुछ लोगों को मदद करेंगे ओके जरूर सर जरूर कोई लफड़ा ही नहीं सर इसमें तो
जरूर डाल दूंगा भाई। और बताओ कुछ, और कोई सेवा? Welcome to Tsukumomono Groceries. We've got everything you Tsukumomono need. Can I help you Groceries. find something? Or perhaps There is something you want to inquire about. So you're friends of Kurosawa, I take it? Perhaps you're here to pay off his debts. Whoa! Let's not get ahead of ourselves. We're just here to learn where they all came from. How did Kurosawa end up owing you so much money? Did he buy anything super expensive here? Let me think. Kurosawa would come regularly to purchase large quantities of foodstuffs. He'd always put the payment on his own account. However, the price of provisions began to skyrocket recently, and his salary was no longer enough to cover the cost. So, he started writing out IOUs to cover whatever he couldn't afford of the usual amount. So that's how he was getting those emergency provisions. But why did he have to purchase a usual amount? If the prices increased, couldn't he just buy less? Well, if you think about it, the citizens receiving the emergency provisions must have been carefully calculating how much they needed to sustain them each time. Kurosawa thought that it would be quite the disappointment for them if they found they didn't have enough, especially after such long and careful planning. So he deemed it necessary to take on the debt rather than let the people down. Wow. ये मैं हर बार भूल जाता हूँ बताना। Kurosawa was purchasing all the emergency provisions at his own expense. And no one ever appreciated what he did. They just complained and held him accountable. People's attitudes will always reflect their circumstances. In the face of hardship, no, but if you ask me, had Kurosawa told everyone the truth about the supplies from the start, then there wouldn't be such a severe backlash now. Of course, I'm sure there would still have been some unrest. What he was doing was truly a thankless deed. As for why he chose to spend his own money on emergency provisions and never tell anyone, I'm still not too clear myself. If you're still curious, why don't you go ask him yourself? I see. That reminds me, it seems that his vision was recently confiscated. Most unfortunate. If he doesn't clear the debt on his name, he'll have no choice but to sell that sword that is so dear to him. Sword? What sword? Oh, didn't he tell you? He possesses a very valuable blade. He's carried it for years now. I've asked him about its origins. He told me that it was a gift from his father, that it was too precious to sell. In hindsight, I regret that I never made an offer on it. Everything has its price. Why don't you ask him about the sword yourself? Perhaps it'll even provide you with the answers you're looking for. Oh, but before you go, if you would kindly settle today's bill. But we didn't buy any... Information is also a kind of commodity, wouldn't you agree? Don't worry, I won't charge much for information about Kurosawa. Nothing we ever discussed was explicitly confidential anyway. Oh, let me think. To that... At least we now know where the emergency provisions are coming from. Plus, we found out that Kurosawa has a priceless sword. Let's go talk to Kurosawa again. Nice. Kurosawa. What are you doing here all by yourself? Where did those other two go? I presented them with a choice. Either they left or I drew my sword. They left. It turned out to be a real time saver, actually. Perhaps I should start using it more often. Did you manage to track down the treasure hoarders? Everything I said was true.
Everything I said was true. Nice. That just about sums it up. It turns out that you really were distributing emergency provisions, but they were all purchased at your own expense. Strange. Is that really the kind of person I was? I don't really have any such recollection. Even after all you've told me, I still don't remember anything. Why was I purchasing emergency provisions for everyone? And why would I put myself in such a difficult situation? I really don't understand. But I cannot deny that when I brandished my sword to scare those two away, I could sense that my body was somehow... this sword was once wielded by my father. नहीं इनाज़ुमा की यार इन्होंने रीजन बढ़िया बनाया काफी. Sweet, nice. Out with the blade and बहुत show अच्छा it लगा off to the मुझे. kids next door. Graphics बढ़िया हैं. My father ended up catching me in the end. What did he say? It would seem that I forgot many important things when my vision was taken from me. So many memories gone. All I can remember now is my father telling me that this blade bore his life's creed. Before he passed away, he placed the sword in my hands and said to me, "With this sword, you should..." Hey, if you look carefully, there seems to be some words engraved on the hilt. Can you recognize the words? Virtue, and somehow those two words seem to explain everything now. Taking on seemingly endless debts to make others happy. I guess that must have been my greatest hit, but what use are virtue and justice? I purchased the provisions for those in need, and look how things ended up. The Tenryo Commission seized my vision, and the very people I was so desperately trying to help refused to understand me. And the irony of all of it is, I somehow still felt sorry when threatening them with my blade. I'm incapable of being a good person, yet I'm equally unable to be bad. I don't know. Yet another troubled. When we get the chance, let's speak to Toma about Kurosawa's debt. The Yashiro Commission would sure... In any case, we must never let him sell off that sword. Yeah, seems like losing all ambition is a terrible... Fortunately for us, you don't have a vision. Let's go find the next poor soul. नेक्स्ट बंदा आ गया भाई. 3 मिशन बोले थे उसने करने के लिए. लास्ट वन इज देयर. Find the next person who lost their vision. The third person who had their vision taken is supposed to be a famous sword master around these parts. Paimon heard that he's the present-day master of Meikyo Shisui art. Sounds pretty impressive. This is his dojo. Luckily, there's some people around. Let's go talk to them. Nanako, don't worry. Sensei will be fine. Those thugs that challenged the dojo were strong, but he fought them all off in the end, didn't he? Maybe, but I'm still worried about him. Things have gotten dangerous before in the past, but it's never It's just because he's been possessed, that's all. Once the exorcism has taken place, he'll be right as rain in no time. Hey there! Did something happen? Who are you? I don't care whether you're trespassers or just here to harass us while Sensei is impaired. Get out of here immediately! Don't make me draw my blade, or you won't live to regret it. No! You got it so wrong. We just came here to... Disciples? Yep. We've heard all about the mighty master of Meikyo Shisui art.
But then we got here and overheard you talking about... From the way you're dressed, it doesn't look like you're from around here. Please, accept my apologies. We've had so many people trying to cause us trouble recently that we're on high alert. You haven't arrived at the best of times, I'm afraid. I see you are earnest in your pursuit. Okay, how about this? My fellow disciple Nanako and I will explain Sensei's situation to you, and Sensei's name is Domon. A name I'm sure you've already heard. Though self-taught, he mastered the art of the sword to a high level. He then proceeded to defeat many other prominent swordmen. He once said that his goal was to become the best sword master in the world. And so, even while training us, he continued to hone his own art. His fervor truly inspired us, and we trained hard. But then... Not long ago, Sensei had his vision taken away. He hasn't been the same since. He says the strangest things over and over, and he refuses to let us train. Junya and I have discussed it, and we both think that he's been possessed by an evil spirit. Okay bro, bye bye, take care. Enjoy your game. Fun karo. Exorcism. But if I'm honest, I still have... The Grand Narukami Shrine? What's that? You haven't heard of it? It's the largest shrine on Narukami Island. The head shrine maiden is reputed to have very close ties with the almighty Shogun herself. Not that we'd have any means of involving the head shrine maiden, of course. But even one of the ordinary shrine maidens from the Grand Narukami Shrine would have clear power and authority to perform an exorcism. So don't worry, Nanako. Sensei is going to be just fine. The exorcism will take place this evening. You're both more than welcome to come and watch if you're interested. So, losing your vision can cause possession? Guess we should come... Shh. So you decided to come. It's a good thing you didn't arrive any earlier. You would have had to witness Sensei in one of his fits of madness. Just now, when Nanako was attending to him, she heard him whispering a few names to himself. When she asked him who the people were, he suddenly looked panic-stricken and pushed her away. It looked like he was in great distress. He was covering his ears and looking frantically around him with bloodshot eyes. All the while he kept calling those names. Some of them we knew. Others we didn't recognize. But they all seemed to... One of them was Anzai. He used to be a fellow disciple of Sensei's. His senior, in fact. But Sensei defeated him in a duel many years ago. And he has been a wanderer ever since. Sensei wouldn't stop calling his name. The ritual has now begun. All we can do is patient. Please, excuse me for a moment while I fetch some water. Huh? Who's that sneaking around? Uh-oh. Could they be here to mess up the exorcism? We won't let them get away with it. Come on, let's go after them. Seems they aren't here. Should we keep going further up? Is this definitely the right place? Let's look a little further up. Aha! Suspicious person sighted! That's gotta... How did you catch up with me so quickly? Are you sure you're Domon's disciples? You movie, unless... I guess it's been a few years. Excuse me? We're the ones asking the questions here. First off, who are you? And what are you doing sneaking around these parts? You seem like bad news, mister. Bad news? I'll have you know I trained side by side with Domon back in the day,
long before you ever show. I don't care to talk about that time anymore. But if you must know, I am Domon's senior. His senior? Wait. Anzai? Yes, that's me. Because I don't wish to see Domon or anyone else associated with him ever again. When we were young, we trained under the same swordmaster, studying Make-Yoshi Sui art together. I had begun training 5 years before him, and everyone looked up to me as a steady and dependable older disciple. Practitioners of Make-Yoshi Sui art seek to achieve stillness of mind, freedom from all agitation. So the majority of disciples are, but Domon was different. The first thing he did when he joined was go straight to our sensei and ask him, with a beaming smile on his face, how to be. Sensei scolded him and told him that the art of the sword, I thought so too at the time. But only then did I realize that he was consumed by. Sure sounds like he meant business. So how come you don't want to ever see him again? Because until he arrived, I was convinced that I would succeed our sensei as the master of Make-Yoshi Sui art. Of all the disciples, I was the most gifted. I had trained the longest. Everyone had high expectations from me. Domon's arrival changed everything. When we sparred, I lost not just the match, but my pride and my status too. I fled the dojo that day and never looked back. Later, I heard that he sparred with Sensei too. Sensei was advanced in years by then, and unfortunately, after that I wanted nothing for. So, when I heard, I decided to quietly come and see if it were. So you see. Okay, you've heard my story. You should get back now. Seems like we got it. Still, Paimon's not sure we should bring him back with us. What? You're saying he isn't possessed? Does that mean that he's just lost his mind? But how is that possible? No, I refuse to believe. Nanako, please. Try not to get agitated. I am sorry. With what powers I have, I can find no sign of any malignant spirit having possessed Domon. But spirits may take a myriad of forms in this world, many of which I cannot claim to have. And all is certainly not lost. For I received word not long ago that Lady Yai has taken an interest in your sensei's case. Lady Yai? Is that the same Lady Yai that I think you mean? The head shrine maiden of the Grand Narukami Shrine? That's wonderful news! Then Sensei will be sure to recover. Correct. Lady Yai is most knowledgeable indeed, and has abundant experience in the exorcism of evil spirits and aversion of great calamities. I am unable to say for certain whether an evil spirit has possessed your... Excuse me, Miss Inagi, but I must ask, should we prepare a greeting gift for Lady Yai? That won't be necessary. All that is required of you is your timely arrival at the Grand Narukami Shrine. Lady Yai does not like to be kept waiting. I must leave now, but we will meet soon at the shrine. I wish Domon a full and speedy recovery. Who'd have thought Lady Yai herself would have taken notice of our sensei's case? करो spoil कर दो भाई सब कुछ spoil कर दो आगे आप लोग Renowned enough to deserve Lady Yai's attention? No, that's not what I meant at all. You misunderstand me. मत करो भाई spoil This is Lady Yai, the खेल रहे हैं head अभी shrine यार maiden. why are She you has spoiling direct and close contact with the almighty Shogun herself. Anyway, given that you've traveled all this way just to meet our sensei, we, the disciples of Make-Yoshi Sui art, will do our best to help you. Sure! After all, everyone seems pretty excited about Lady Yai. We're curious to meet her too. Who knows? Maybe we'll be able to find out a thing or two about the Raiden Shogun from her.
today. Taste my flame. अरे ये तो ना ऐसा है जैसे समथिंग लाइक वो है ना, पहाड़ी एरिया टाइप लग रहा है भाई ये तो बिल्कुल। भाई बड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे तो। फिजिकल टचिंग कैसी है? नाइस है ब्रो, नाइस नाइस। इक्वली है यार वो, दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आई मीन फिजिकल हो या इलेक्ट्रो हो। ये हो क्या रहा है फिर, कोई समझ नहीं आ रहा। ये हो ये रहा है कि न्यू मैकेनिज्म्स हैं। सोनू भाई मैंने पूरा कर दिया। ओके ब्रो, बट स्पॉइल मत करना भाई। वेलकम टू द स्ट्रीम, स्पॉइल मत करना प्लीज़। बाकी सब ओके है। वाह यार, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है, ब्यूटीफुल। Do you think that's Lady Ai? Oh, no wonder Junyo is so excited. She has a really striking presence. Also, is it just Paimon? Or did she look right at us just now? It was probably nothing. It's not like she's ever seen a— Keep away. Keep away from me. I gave up the art of the sword. Please, let me go, I beg you. As you can see, Lady Yai, Domon has persisted in this state for some time now. He appears to see those who have lost to him in duels past, gathered all around him to persecute him. Lady Yai, it must be a possession, right? This is nothing like him at all. In the past, no matter what came his way, he would always face it with a confident smile. I'm sorry. It is clear to me that your sensei is not possessed by any evil spirit. But then does that mean he— Yes. This is a change in the person himself. Unable to cope with the tremendous pressure he was under, he suffered a spiritual collapse. With his wits impaired, he finally descended into madness. As one who is thrown into the sea, though he fights back desperately against his predicament, it does nothing to prevent his descent into the depths.
As for what has triggered this change, I believe it must be the loss of his vision. For to be stripped of one's vision is to be stripped of one's ambition. Stripped of his ambition? But Lady Ai, even without his ambition, why should he suffer such a dramatic change? How does that explain his descent into madness? Your school practices Meikyo Shisui art, does it not? Stillness of mind, freedom from all agitation. What a fine notion that would be if any in this world could ever hope to achieve it. There was once one who claimed to be indifferent to rank and reward, and who fled enraged when defeated by his junior. And then there was an aged swordmaster who was aggrieved enough that he crossed blades with a disciple he himself had taught. Then, what if the one who crossed blades with his own sensei and beloved fellow disciple, and defeated them both? Can one truly remain unagitated, of still mind in moments such as these? Lady, I'm not sure I understand. Welcome to the stream. The path of the swordmaster is filled with twists and turns. It is no small undertaking to pursue the position of greatest swordmaster in the world. It requires one to take their sword firmly in both hands and cut down the hopes and dreams of others, even those of one's closest companions. Only a deep commitment to his ambition to become the best made it possible for him to rise above the pain of these encounters, to focus on the way ahead. When that ambition disappeared, he began to doubt himself. As he battled his growing anxiety, he slowly descended into the state you see him in now. Much like a certain fatally flawed friend of mine. Poor Sensei. To think he's been suffering so greatly. I'm sorry. It's all my fault. Father, Sensei, Ansai. That's enough. भैया को आया का मेरा पुल ही नहीं किया भाई मैंने अभी. Where did he come from? काफी टायर्ड हूँ मैं लेग्स are hurting. हाँ आराम करो ऐसे करो भाई. Ansai, why are there two of you? Is that you or a ghost? You're here for revenge, aren't you? I knew it would come. I never should have. You're right to assume that my feelings towards you are far from kindly. But I didn't come here to settle a score. It's been so long now that I made peace with it years ago. You did nothing wrong that day. I just... I couldn't face the humiliation. आज 14 That's why I ran. Good. I don't think most of the people you beat along the way would hold it against you. On the contrary, when you cut our ambitions short, we entrusted them to you, in the hopes that they might carry you further. Now I know that we can't place our hopes in you any longer, since you've been stripped of your ambitions too. भाई गेम खेल रहे हैं सर दुनिया गेम खेलती है जैसे हम खेल रहे हैं वैसे भी खेल रहे. Follow the way of the sword all the way to the highest peak. You taught them that, didn't you? But what if one day the same thing happens to them? I put everything I had into trying to become the best. But what if it was all a huge mistake right from the start? If there's a chance they'll end up like me one day, I'd rather they stay where they are now than go any further down this path. Have you asked them what they think? Sensei, after you rescued me from the hands of the pirates, I told myself I would follow in your footsteps for the rest of my days. I can't know whether I will suffer in my future as you do now. All I know is that here and now, in the present, I wish to continue. I want to keep going until the day that I can stand before everyone with my head held high and announce that I, like my sensei Domon before me, am a master of Meikyo Shisui art. Nanako's far from the only one. Actually, all of us think that way. Goodness. Well, You see? You can place the ambition you once had in their hands. Being stripped of your ambition is something that's never happened to me. Welcome. So I can't claim to understand it. Story spoil मत करना I भाई. do know what अगर it खेल feels लिया like तो to have don't your spoil the story. ambitions पहले crushed. बोलता हूँ. That's what happened on the बोलना day पड़ता है हर you किसी को so मुझे. effortlessly defeated me. So, just as I once placed my ambitions onto you, you are not in the same position that I was.
When I left, I had nothing to my name. You have a great number of worthy disciples. I understand. I'm sorry to have made you worry for me, and for the state of Miyakyo Shisui art. I no longer have the resolve to become the best in the world. The emptiness and suffering inside of me will not abate, so I cannot hope to still my mind and be free of agitation. But as your sensei, I shall commit to imparting unto you everything I have learned in my life so far. This is my promise. And I humbly ask Anzai, my senior, to hold me to my word. You can count on that. I'd be checking in on you occasionally anyway, just to give make you sure my you ID hadn't lost and your can you mind summon again. Ayaka and review my ID? But I am now used to the life of a wanderer. I do not belong in the dojo PM कर दो anymore, मुझे. so I will simply stop by once in a while to make sure you Discord पे aren't DM cutting कर दो any भाई. corners with them. Well, don't just कितना stand there लंबा स्टोरी है, staring बहुत at me. लंबा है भाई, बहुत लंबी Say स्टोरी है. thank you to Lady Yai and then बट get बढ़िया है, yourself back अभी तक home. मुझे अच्छी लगी. थोड़ी सी ज़्यादा है, बोरियत थोड़ी सी है, बट अच्छी है. So even though his ambition was taken away, his disciples can take it over on his behalf. Guess that sort of solves this one, huh? पानी गिर रहा है ऊपर से. अभी के लिए आईडी ओके. आपको कितना टाइम लगेगा इनाज़ुमा आने में? मैं आज ही शुरू किया, अभी मैंने 9:30 बजे स्ट्रीम स्टार्ट करी, 9:30 बजे शुरू किया, देख लो अभी लगा लो. अरे इनाज़ुमा तो 2 मिनट में पहुंच जाते हैं, 5 मिनट में इनाज़ुमा पहुंच जाओगे. वहाँ पे क्वेस्ट पे कह रहे हैं बस. So, my intuition was correct. The wind that blows from afar carries fresh life to these shores. For us to meet now is premature. Nevertheless, you set foot on these islands at precisely the right moment. I have high hopes for you, child. Don't disappoint me. Ooh, Lady Yai seems to have taken a real interest in you. Okay. She seems super mysterious. Let me see. We can come back to it another time. For now, we should go report back to Miss Kamisato. गाइस रुको जरा 1 मिनट के लिए, भाई के अकाउंट पे लॉगिन कर लो. भाई कोड सेंड करना, कोड.
बे गुड लक विद द स्ट्रीम। मैं थोड़ा रेस्ट करूँ, बाय बाय, ठीक है। रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, विश करने लगे हैं। अयाका पे विश करने लगे हैं, देख लो यार, 2 मिनट की बात है। या भैया टाइम से एक्सपायर हो जाएगा, ओनली 5 सेकंड लेफ्ट, जल्दी जल्दी। दोबारा करूँगा फिर मैं कोड सेंड। आज मोना पुल करते हुए मिल गए, नाइस। हाँ आज वैसे AR 5045 हो गया मेरा, गुड। न्यू भेज रहा हूँ भाई। दिल टूट गया आज मेरा, क्या हुआ? चीची मिल गई? यस, चीची से दिल टूट गया ना। आ जाओ स्ट्रीम पे भाई, स्ट्रीम पे आ जाओ, डिस्कॉर्ड पे चिट चैट चेक करो, समझ जाओगे। टेन करके विश कर दूं, 10 करके, 10 की विश कर दूं भाई, ऑप्शंस रहते हैं फिर, बढ़िया यार। ओके, 10 से बेटर रहता है ना, हमारे पास चांसेस हो जाते हैं मल्टीपल कैरेक्टर्स के एंड ऑल। ओके सो लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। ओ हो, अयाका, 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 यनफी, नाइस ब्रो, नाइस। अयाका, वाओ, वेरी गुड डेबू भाई, नाइस। यनफी एंड अयाका, वेरी गुड ब्रो। It was good. बढ़िया भाई, गजब है।
अगर कुछ और होता ना तो वेपन पे भी कर लेते हम, वेपन पे, बट डन हो गया अब तो। ठीक है ब्रो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्लस गुड। मेरे अकाउंट से यो पुल करना, हाँ 3 स्टैंडर्ड भी कर दूं? ओके, कुछ चांसेस हैं किसी के? रस्ट मिल चुका है वैसे, चलो 10 नहीं है। ऑल्सो गेट बेनिफिट, बढ़िया भाई। 4 स्टार कैरेक्टर आपको मिल जाए अच्छी बात है। व्हाट व्हाट 5 स्टार, 5 स्टार ब्रो, you got another 5 star, what the hell? What the hell is this? What? कच्ची मिल गई भाई को। I was thinking के सारी 4 स्टार मिल जाएगा कुछ तेरे तुझे करेक्टर भाई। कच्चिंग, नाइस, ओके, गजब गजब हो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो। भाई 2 5 स्टार, दोनों डीपीएस, बढ़िया भाई, और क्या चाहिए यार। ये भी मिल गई, बढ़िया। ये है शिंचू भी है, ये भी है, ये भी है। टीम तो बढ़िया हो रही है भाई आपकी, 2 टीम बन जाएंगी परफेक्ट भाई। कॉन्टैक्ट, हाँ भाई जबरदस्त है, जबरदस्त भाई, जबरदस्त। गजब ही छा गए हो भाई आप तो। अयाका आर्टिफैक्ट्स हैं ऐसे, कुछ पीसेस हैं, पड़ा है कुछ? ब्लिजार्ड पड़ा है वैसे, हाँ काफ़ी बड़े हैं ये, बस यूज़ कर लो इसको, अप करो। बढ़िया क्रिट रेट रखा है इसमें, ये भी बहुत बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। इन दोनों को करो, मैं मार्क कर देता हूँ जो जो बढ़िया हैं, लॉक कर देता हूँ इनको, जिन जिन को यूज़ कर सकते हो। इसको ट्राई कर लेना, अगर क्रिट का कोई रोल हो गया तो बेटर है। क्रायो डैमेज ऑसम है ब्रो, ऑसम, फुल ऑफेंसिव है, ऑन सेट है, क्रायो डैमेज है, क्रिट डैमेज है, अटैक है, ऑसम ऑसम, ये भी बढ़िया है। इनको पहना दो, कोई दिक्कत वाला सीन ही नहीं है इसमें। इनमें से दोनों को देख लेना, वैसे मैं इसको प्रेफरेंस ज़्यादा देता हूँ क्रिट डैमेज को, ठीक है। और ये दोनों में से ये आपका ऑफसेट भी चल जाएगा, कोई ऑफसेट देख लेना, इसको रहने दो। एंड अभी के लिए चाहे ये दे देना, यू कैन गिव इट ऑल्सो, ये भी दे सकते हो, इन दोनों में से कोई भी दे देना अभी के लिए। डन है बस, ठीक है, समझ गए ना? या कोई और देख लेना अगर कोई बढ़िया मिल जाए टैग में, इसको ये बढ़िया है, या इसको एक बार ट्राई करके देख लेना, करके देखूं है मटेरियल है कुछ, आप खुद ही कर लेना यार, बेटर रहेगा। आर्टिफैक्ट का लफड़ा कुछ और होता है। ठीक है ब्रो, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, ठीक है। इट वाज नाइस, बहुत बढ़िया था। I was forced to learn all of the rules by heart, but even I don't take them that seriously.
मैंने लॉग आउट कर दिया। देबू भाई एक काम करोगे जरा, भाई लॉग आउट कर दिया मैंने आपके अकाउंट से, एक काम कर देना। आई वॉज मैं भूल गया चेक करना, आपकी स्टैंडर्ड बैनर पे पीटी क्या थी ये देखना था। चलो गजब है भाई, जो भी था मतलब बढ़िया यार, आपको 2 5 स्टार मिल गए, मतलब 10 13 13। चलो दोबारा लॉग इन करके देख लेता हूँ 1 मिनट, वो भी सही है वैसे, मतलब हमें एटलीस्ट पता तो हो ना, क्या पता भाई, मतलब ऐसा हो कि 80 पे घूम रहे हो, हम ऐसी खुश हो ये होते रहें, फिर वो खुशी का ठिकाना बदल जाता है ना। अगर 80 वाली बात है फिर वो इतना खुशी वाली बात नहीं रहेगी, अगर 80 है तो। नहीं अब कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हो जाएगा सीधा, बस डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। परमिशन दे दी ना आपने, बस फिर डन है। देखना है मतलब जस्ट के स्टैंडर्ड पे पीटी क्या थी वैसे। 1 2 3 4 5 9 8 पे 50 पे मिल गया आपको, ग्रेट यार। 50 पे 5 स्टार मिल गया आपको स्टैंडर्ड बैनर पे, बहुत बढ़िया यार। मेरे कैरेक्टर बैनर पे डी लुक पे पीटी देखना, कैरेक्टर बैनर तो खत्म हो गया, अब तो मिल गई ना वो, उस पे तो देखी थी मैंने, विश करने से पहले देखी थी, उस पे तो थी काफी। गलत बात सर जी, भाई ने आपको जैसे भी कंटेंट तो दिया ना। हाँ हाँ कंटेंट तो दिया भाई, मैं खुद बोल रहा हूँ। मॉर्निंग में दे देते ना, मॉर्निंग में बंदे ज़्यादा थे तभी देते। पीटी में मैंने देख लिया था वो, अब लॉग आउट कर दिया भाई मैंने, देखो फिर से लॉग आउट कर दिया, लॉग आउट कर दिया यार, तीसरी बार लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करके देख लेना भाई। बट मैंने देखा था उसको 70 के आसपास थी वो, इट वॉज अराउंड 70। डीलक्स से पहले जो फर्स्ट टाइम है उसका, अच्छा देख लो फिर, देख लो कंटेंट फिर मिलेगा। कोई ना, ये कर लूँ इसके बाद देख लेते हैं, ठीक है। हाँ सुबह करवाते हैं ना ये, बंदे भी थे भाई, मतलब बढ़िया रहता है यार। 20 25 तो थे तब। अभी इसको क्या देखूंगा मैं, अभी क्या देखूं इसको, ये तो बच्ची है अभी तो। वाह रे वाह, जेड कटर, ये भी सही है, ये भी सही है, बढ़िया भाई, अच्छी है, फ्लैक्स हो गया। चलो बाय, हमें ज़्यादा होगा। ओके टेक रेस्ट, बाय बाय। Oh, Ayaka!
हाइलाइट्स बनाना मैं स्टेटस। अच्छा नंबर 2 पीस हाइड्रो एंड 2 पीस मॉबलस एंड हेल्पलेस। अच्छा मोना के लिए बेस्ट आर्टिफैक्ट। हाँ जी सर ये तो बता दिए इसने। Traveler, Paimon. It is a pleasure to finally meet you both face to face. I have heard all about how you helped our 3 friends. My sincerest thanks to you. Yeah, short of getting them their visions back, it seems like there's no way to really help them. Ayaka, how come this time you get to come out and meet us in person? Because now that you have done the 3 things I asked of you, I consider you to be my friends. As you will observe, I dispense with the screen for Toma also. Mm-hmm. Wait a second. But isn't Toma your, servant? Paimon's happy to help and all, but Paimon sure as heck did not sign up to be a servant. Oh. Paimon, you are most entertaining. Toma is first and foremost my friend, and was so before he ever became my attendant. Oh, okay then. Ayaka, you seem pretty different out in the open compared to how you are behind the screen. Thank you both kindly. Back to the matter at hand. You have now perhaps in the eyes of a deity such as the Almighty, thunder's roar, lightning's flash, the wind's assault, and the rain's descent. All these things take place with no regard for the feelings of the common people. But I believe that surely you understand what they must endure. It seems that perhaps now you can appreciate my feelings on all of this. In which case, perhaps you would be willing to reconsider your stance? हाँ यूजर्स वाले को लेटर बना लेना भाई, बना लेना कहीं तो यूज होगा कुछ, ट्राई करके देखो। Really? लास्ट रिपीटी देख लेना ये खत्म होने के बाद। Naturally. All right, bravo, my lady. You were right all along. See? I told you he wouldn't reject them. I'd placed my trust in the right person after all. Now then, given that the remainder of our discussion pertains to matters of a more confidential nature, perhaps we could move to the Komori Tea House? We ought not to involve other members of the Yashiro Commission. Well, here we are again. Please continue without me. I'll keep watch. So, what's the deal with this place anyway? What makes it your favorite meeting spot? This is land that was gifted to the Yashiro Commission by the Shogun. The Kamisato clan has the exclusive right to plan, build, and repair any property on this land, and even to allow or deny access. Such privileges exist due to the Yashiro Commission's role in managing ceremonial affairs. Oftentimes, it is not appropriate to discuss details in front of bystanders. Oh, Paimon gets it! Gotta keep a bit of mystery. Once the number of ceremonial affairs conducted in the city began to decline, our forebears built a tea house here. Makes sense. Perfect place for a secret bit. In any case, we can talk freely here. I presume you have a few questions that you wish to ask me? The almighty Shogun. I've seen her on but only a few occasions, most of them formal ceremonies. She inspires awe, commands respect, and exudes a sense of absolute authority. But as I recall, there was something else about her that struck me even more deeply. It was her almost complete lack of any emotion. In that sense, she appeared to me to be less of a ruler and more of, well, an executive official, I suppose.
focused exclusively on her single goal of implementing eternity, acting accordingly without feeling. Is no one else fighting the Vision Hunt The Decree? issue is this. For the vast majority of people, the Vision Hunt Decree is something that has no implications whatsoever. After all, it is but a tiny minority of people who receive visions. Moreover, it is not unknown for visions to spark jealousy in others. Because of this, the attitude of most people towards the Vision Hunt Decree is one of indifference. How can they be like that? Paimon's getting mad. Nevertheless, in addition to us, there is also the resistance on Watatsumi Island. Resistance? You mean like an army fighting against the decree? Yes. Many who have lost or fear losing their visions have rallied together under Sangonomiya on Watatsumi Island to form a resistance group. To say a little more about Sangonomiya, historically, there has always been some conflict between them and the shogunate of Narukami Island due to their different belief systems. But I do wonder whether there may be some Yo, other Rupesh agenda bro, behind the welcome. कैसे हो? resistance movement, beyond merely fighting the Vision Hunt Decree. बहुत गेम खेल के खत्म कर दी. Nice. Of course. Spoil We've मत करना tried अभी. on numerous occasions. Unfortunately, each time a proposal to repeal the decree arrives at Tenshukaku, it is promptly vetoed by both the Tenryou Commission and the Kanjo Commission, and subsequently scrapped. They invariably adopt a stance of unconditional support for the shogun's decisions. They have no interest in discussing anything. It almost makes one wonder whether they had a hand in the shogun's sudden decision to issue the Vision Hunt Decree. Hi, Fire Gaming, welcome. कैसे हो? Oh? What would you दो like to know, हेडफोन लगा लो. Paimon? बिना हेडफोन के मजे नहीं आते. हेडफोन ही लगाया होता भाई मैंने. To मैं be हेडफोन लगा के honest, बैठता हूँ. we do not. What? Please, do not forget that challenging the Vision Hunt Decree is tantamount to challenging a deity. Coming to terms with that is already a difficult step to take. So what are we gonna do? Well, for the moment, all we can do is try and reduce the harm that is being caused by this decree. For example, by providing vision bearers with safe refuge, or manufacturing counterfeit visions for them as a contingent. You're telling Paimon that there are people out there who can make fake visions? Don't underestimate the talents of the craftspeople in Hanamizaka. To the naked eye, their counterfeits are indistinguishable from the genuine article. The problem we are facing right now is that Master दो कुछ बिल Masakatsu, करने हो गए who was रे. हाँ, providing दो us with करने पड़ेगी counterfeit अब. visions, has recently been arrested by the Tenryou Commission. Darn! So they found out about it? Ugh. Yes. We knew it was not a long-term solution, and that it was only a matter of time before it would be exposed. But we cannot simply abandon Master Masakatsu. Next abyss ये होगा. Ayaka मिल गई. Exactly. I feel the same way. But given my... By no means do we intend to place the burden of such a task on your shoulders alone. When you are ready, go to Hanamizaka and look for a fireworks shop run by the Nagonohara family. There, you will find someone who can help you. Player may where content give us content may where these 2.0 suffering from success. कभी ऐसे कंटेंट दे दिया ना.
Just hand it over. You don't want any trouble with me. Ayaka तो बेकार है यार. Oh, सच्ची में? बेकार? क्यों? If you think your elemental powers are enough to resist the Vision Hunt decree, then you'd better think again. Believe me, you're not the first of your kind we've encountered, and we've seen the same unpleasant outcome time after time. You'd best save yourself the trouble. जीन कहीं ज़्यादा Can't you डैमेज make an करके कंपैरिजन exception? है. I Ayaka just बरूंगा got this बेस्ट वेक्टर. vision. I won't even use it, I promise. So this is the Vision Hunt decree in action, huh? We can't just sit around and watch things unfold, can we? मल्टीप्लायर्स लो है काफी Ayaka पे. एसिड बॉय एसिड खा लो. ब्रो Ayaka का अच्छा बिल्ड करो पहले. Hey, wait! Huh? There's someone trying to get our attention. Come on, this way. What's going on? Can't you see we need to go help? Shh, quiet. Just sit tight and watch for a moment. Hey, this isn't right, you know. Just because you don't have a vision doesn't mean you can sit back and watch others in trouble. Huh? Hey, wait! You do have a vision! Shh! If you don't keep your voice down, I won't have one much longer. All right. Here, take it. Wise choice. All right, let's go. बहुत प्यारी वाणी बोलता है. What should we do now? He's already given up his vision. Doesn't he know what could happen to him after losing it? This is your fault. You're the one who stopped us from interfering. Many thanks, Miss Yoimiya. If you hadn't swapped me a fake just now, I'm sure I would have lost it. No worries. You put on quite the convincing performance. Oh, so that's what's going on here. And to think Paimon is about to unleash Paimonial wrath on Miss Yoimiya. Sorry about that. Think nothing of it. I could tell from your reaction we were on the same side. You just didn't know it, you know? Oh, right. Allow me to introduce myself. I'm Yoimiya, the current owner of Naganohara Fireworks. It ain't much, but it's honest work. Great to meet ya. Practically everyone on Hanamizaka knows Yoimiya. She's the queen of the summer festival. Without her and her fireworks, summer on Narukami Island just wouldn't be the same. Whoa, that's quite the introduction. Paimon loves fireworks. It's nice to meet you. रात का स्ट्रीम देखना वर्थ इट होगा. Stop it, Hanjiro. You'll embarrass me. As for thanking me, you'd be better off thanking Master Masakatsu. He's the one that gave me the fake visions in the first place. His handiwork allowed me to keep my own vision. Whew, I can't even imagine trying to run the business without it. Ugh. Yes, Master Masakatsu is a good man. It's too bad good people seldom get the recognition they deserve. Master Masakatsu? Huh? Do you guys know him too? You don't say! Then it sounds like the Shirasagi Himegimi has a plan. Awesome! I've been thinking about breaking him out too recently. But if I just march straight in there by myself, I'd probably get Miss Kamisato in a whole heap of trouble. So, what about if I Ayaka join की you बस्ट instead? 4300% का मल्टीप्लायर देती है. Second after Seems like I Yula. finally got a new job to do. 6000. Besides तो आप hiding भाई vision कम बोल mirrors रहे हो in उसको my shop, that मल्टीप्लायर. is. आप कह रहे हो कि उसको मल्टीप्लायर Mr. काम है. Masakatsu is being held at the police station. I've already surveyed the area and found a way लेवल in. 1 टैलेंट पे कंपैरिजन. A reliable source. Seems we've got the अबे घोंचू स्टार्टिंग से कंपैरिजन ठीक है. Not bad, huh? ये भाई ऐसे मत बोलो यार. Everyone's ready. Don't worry, my time. Not a good language.
घोंच घोंच लग गई रे बाबा। एसिड, अरे यार ऋषु भाई आप थे यहाँ पे, मुझे लगा यू वेंट ऑफ। मैं तो दिखाना था, इंट्रोडक्शन दिखानी थी आपको। चलो कोई बात नहीं, अयाका आई थी वो दिखानी थी, लीव। चलो कोई बात नहीं, लीव। एसिड अयाका है तेरे पास, अयाका का जीन से क्या कंपैरिजन? तू पहले क्राउन कर दे अयाका को, फिर कंपैरिजन कर। इट नॉट मेक एनी सेंस यू कंपेयर माय न्यू अयाका टू fully built gene. Yeah. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. पसंद मत लो बाबा, इट्स ओके। चिल करो चिल करो, लड़ भिड़ मत पड़ना अब, कतई गड़बड़ हो जाएगी गड़बड़। Who said full build से compare? पहले कॉमन सेंस लेके फिर बात करेंगे। Now that we're inside, this place is a whole lot creepier than Paimon imagined. Come on, this way. As long as I certainly wouldn't want to end up locked away in here. Let's find Master We should split up. I've got a little present to prepare for Master Masakatsu. I'll be right back. You sure? All right then. Yes, you too. Oh, finally fight. Nice. 3 घंटे से घुमा घुमा के पागल कर दिया। I must withdraw. क्या हो गया मोटू भाई? कुछ ना हुआ भाई। ओके आप सही, शायद उन्हें गलत। नाउ हैप्पी। I will wait for some pro F2P to make compare. Talk about a big door. Yo. Collect something shaped like Magatama in order to open it. Burst forth. I'm going in. Order guide you. Eyes on me! I need to train harder. छोटू सब गेम खेलने में बिजी हो गए हैं। हाँ सच्ची हो गए हैं। ऐसे तेरा साबुन स्लो है भाई। एनिमो एप्लीकेशन एम्पलीफायर एलिमेंट है, क्रायो ऑफेंसिव एलिमेंट है, एनिमो रिवर्स एंड फ्रीज एलिमेंट नहीं कर सकता। एनिमो करेक्टर के मल्टीप्लायर हाई होते हैं। छोटू देख टॉप पे ही बैठा हुआ। F2P वाले के पास इतने पैसे भी हैं। Who goes there? Come into being. Gather. I've lost. This wall looks a bit odd. Maybe there's some special trick to it. I'm speechless. ऋषभ भाई इस लोगों को क्या समझाना जिसके पास कॉमन सेंस। These guys seem a lot tougher than usual.
has anything to do with the source of their strength. Teach me a lesson. Soldiers, quick! Solidify! Everybody stand back! I will have order. Burst forth. Bested. Allow me to strike first. Don't hold back. I need to train harder. ऋषभ भाई भाई डैमेज बोल रहा हूँ, रिएक्शन नहीं। अरे भाई ऑटो अटैक की बात कर रहा है ना। एक जुआ C6 पर एनिमो यूज करता है, एका C0 पर। देख दिख रही रहा तेरी उड़ा रहे हैं हम सब मिलकर। खुशखबरी, आज मोहित भाई के लक ने मेरे को 2 5 स्टार दे दिए। अरे बाबा, हाँ एंजॉय करो भाई। नेक्स्ट 50-50 आपके नाम। पक्का ब्रो, पक्का। हर बार नहीं होगा पर ये Teach me a lesson. Come into being. Show me what you got. I dare you. To ashes. Teamwork is dreamwork. I need to train harder. Burst forth. Witness my great undertaking. I've been bested. स्ट्रीम पीछे देखो पता चला। अच्छा स्ट्रीम पीछे, हाँ बैक पे जाओ, कौन से रूट थोड़ा सा बैक पे जाके देख लो, स्ट्रीम पता चल जाएगा। ऐसे बबला क्या, वाई आर यू कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंज? एवरी कैरेक्टर हैज़ ए बेस मल्टीप्लायर ऑन विच वेपन आर्टिफैक्ट और दिन रात 80 विशेष से पहले कोई कैरेक्टर नहीं निकला। आज एनफी कॉन्सलेशन को का निकल गई। इसका म्यूजिक भी अच्छा है, हाँ नाइस है। हाउ कैन यू कंपेयर टू कैरेक्टर्स बाय लुकिंग एट देयर बेस मल्टीप्लायर इफ दे आर फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट क्लासेस? Come into being. भाई म्यूजिक बहुत बढ़िया बनाते हैं यार ये लोग, रियली लाइक इट। Burst forth. Stabilize. नाइस, मैं भी सांस में गिर गया उसके, मुझे पता ही नहीं चला नीचे जगह नहीं है, ऐसे ही कूद गया यहीं पे।
बहुत सुशील सखी सावित्री आयाका। अब खुश हो जनाब, ये लियो के फाइट्स बेस्ट हैं। ये जस्ट म्यूजिक की बात है, म्यूजिक यार इन्होंने बढ़िया बना रखा है सिस्टम सारा। वाओ Shh! Quick! Hide! Look over there. That must be Master Masakatsu. Did you really think that little trick of yours could fool us? Locking you up was just the beginning. No! Oh no! Those Tenryou Commission brutes are torturing him! If we don't come up with a way to break him out fast, then... Huh? Yoimiya, when did you get back here? I can't bear to watch. If anything happens to Master Masakatsu, our whole plan will have been for nothing. Hey, you there! What are you doing? Ma'am. We were just teaching him a little lesson, that's all. Huh? Who's that? That's Kujo Sara, adopted daughter of the Kujo clan of the Tenryou Commission. She's also a general in the Shogun's army. What's she doing here? Make way, let me have a look at him. I'm sure you're well aware that torture is strictly against military regulations. Yes, ma'am. If you are unashamed of such disgraceful action, then you are also unworthy of the Tenryou Commission itself. Do I make myself clear? Yes, ma'am. It won't happen again. Oh, Paimon sure wouldn't want to get on her bad side. Hey, this is our chance. Let's move while they aren't watching Master Masakatsu. Yoimiya, are you sure now's the right time? Who is that? Quick, go and investigate. Yes, ma'am. They're coming! Quick, hide! Sorry. I didn't mean to... Don't worry, I've got us covered. Time for my little present. Fireworks! Huh? Was that an explosion? It sounded like fireworks. Quick, let's hurry! Sara. The fireworks were enough to distract them. Maybe more than enough. I don't know. Fireworks aren't just for festivals, you know. I was particularly proud of this batch. I decided to. चलो डर के चला गया लगता है मम्मी के पास। अरे लीव इट यार। Well, fireworks are my craft after all. Every batch has to be... Look, the coast is clear. Now's our chance. क्या हुआ? डेबू भाई के लिए विशेष की। डेबू भाई को आयाका भी निकल आई एंड कचिंग भी निकल आई। 13 विशेष किए, 2 5 स्टार स्क्रीन पे है, देख लो। ये हुआ पॉजिटिव। नेगेटिव कितना भी सुन लो,
और नेगेटिव क्या हुआ? नेगेटिव ये हुआ कि एसिड भाई आए थे और रोशन भाई के साथ भिड़ गए। विशु भाई ने समझाया, फिर वो चले गए। चैट पढ़ लो बस क्या हुआ नेगेटिव के लिए। Master Masakatsu! Sorry we took so long. Oh, Master awful guards. Masakatsu. Master Masakatsu. News! They could be back. Oh. Yes, leave. Before I let my judgment get the better of me. He's in serious condition. Be sure he gets immediate medical attention. But remember, once he's recovered, it won't be long until I bring him right back. Well... you can bet we'll do all we can to keep that from happening. Leave this place. इटाडोरी ने कुछ नहीं पुल किया क्योंकि वो कुछ नहीं पुल करता, वो बातें करता है बस। लाइक मैं गोली मार दूंगा, मैं बम फोड़ दूंगा, ऐसा कुछ। We're finally out of that creepy place. Yes. Master Masakatsu, how do you feel? Can you hold on? Don't worry. I think I can make it to the infirmary without keeling over. Thank you. All of you. I'll take him to get treated. I'll treat you to a round of drinks once this is all over. Don't worry about us. Just take care of Master Masakatsu. Good thing we were able to rescue him. पढ़ने दो, इंटरेस्टिंग लग रहा है। अच्छा पढ़ो फिर पढ़ो। Right, Kujosara. Do you think it seems as though there are some okay? How about we go tell Ayaka? मोहित भाई का मन भटक गया। नाउ आई कैन सी वेयर इट स्टार्टेड। अरे वो गई बस यार, ये तो गलत बात है। मुझे तो था कि और खेलेंगे हम। मैं तो इजीली स्लोली खेल रहा था। 2-3 घंटे में क्वेस्ट पूरी करूंगा। I see. So Kujo अरे भाई क्या ही stayed बंदा on था hand. जीन से आयाका It appears she still कंपैरिजन has कोई some honor सेंस to ही her. नहीं बन रही। आर्टिफैक्ट चेंज करो लेकिन एमी के वहाँ प्लीज। क्यों करूँ भाई? मैं ना करूँगा, मुझे जरूरत ही नहीं है अभी। मैं किस लिए करूँ पहले ये बताओ। फॉर व्हाट रीजन? किस लिए करूँ मैं? मुझे किसी कैरेक्टर के लिए अभी आर्टिफैक्ट्स चाहिए ही नहीं, तो मैं क्यों करूँ? सभी के पास हैं। I wonder if we should try establishing contact with her. Perhaps we could coax out some information. Unlikely. Don't forget, Kujo Sara is also carrying out the Vision Hunt decree. She obeys the orders of the Raiden Shogun without question. In her eyes, Master Masakatsu is of no threat to the decree. This is why she was so willing to allow his escape. If our true motives were ever divulged, she would act against us without a second thought. True. Though if you ask me, Master Masakatsu's release is an unexpected सिंपल सी बात blessing. है, वो एक बड़ा We are now one step closer to victory. And we couldn't have done it without Yoimiya and the Traveler. You're turning out to be even more reliable than we expected. उसकी चैट का कोई सेंस नहीं बनता। Don't mention it. Indeed.
Things may have turned out very differently this time without the help of the Traveler. But if we wish to mount any sizable resistance against the Vision Hunt decree, there is still much to be done. It is time we make ready our next set of plans. There's no need to rush, my lady. Things seem to have taken a turn for the better, at least. Not only have we rescued Master Masakatsu, but our list of allies appears to be growing. Yes, which reminds me, the Tenryou Commission seems to be making preparations for a celebration. They call it a ceremony of sorts. And the number of samurai out enforcing the Vision Hunt decree seems to be waning. The days ahead may be more peaceful than usual. A ceremony, you say? Why would such a task be left to the Tenryou Commission? I don't know, but I'm sure it has nothing to do with us. Anyway, with the Tenryou Commission busy with preparations, we should have a little more breathing room than usual. You do present a good point. Being in a constant state of alert will only tire us further. Perhaps a period of rest is in order. Toma, what would you suggest? I'd say a celebratory feast is in order. Might I suggest an evening of hot pot? Funny enough. A hot pot game? Simply put, every person then we take it in turns to close up. Anyone who guesses correctly can go again. Don't you think it sounds like fun? You really do want to play. Well, sounds like we've got our work cut out for us. Time. Let's see what we've got here. Nice. भाई एक ये बात बताओ पहले मुझे कितना रह गया अब ये क्वेस्ट क्योंकि मुझे स्ट्रीम बंद करनी है अब तो मुझे ये बता दीजिए कि इस कितना टाइम हो रहा है ये तो खाना वगैरह खाने लग गए अब यार हाउ मच टाइम इट विल टेक एंड और अब वो हैकर नहीं है मोहित भाई के पीसी में हैक लगा है 5 स्टार Wait a moment. That doesn't feel good. I'm afraid it's your own fault for adding all those strange ingredients, Toma. The soup flavor wasn't quite the same afterwards. Even with a traveler's अरे आप तो कह रहे थे 1 बजे बंद हो जाएगा मतलब खत्म हो जाएगा 1 बजे तक You the one who added those little cakes, Ayaka? Boiling cakes in hot pot. I must apologize. मतलब मैं कल करूँगा आगे इसको कंटिन्यू Perfectly honest, I thought. मेन थिंग इज चैट भैया सबसे बड़ा रुपया I feel like a new man. You know, Toma, all you had to do was guess wrong on purpose. यार मुझे इसमें इस बंदे को देख के चाइल्ड की फीलिंग आ जा रही है बार-बार ऐसा क्यों Guess I've been feeling unlucky recently and wanted the god of hot pots. जब मैं इसको देखता हूँ बंदे को मुझे चाइल्ड की फीलिंग आती है Get a little carried away. Still, I couldn't be beaten at my own game first time around. कल करो आज किसी इतना पॉसिबल नहीं मुझे वीडियोस बनाने हैं थोड़े से 1-2 वीडियो बना के फिर सो जाएंगे So without further ado, I hereby declare that the winner of today's Hot Pot Challenge is me. Oh, brother. Good effort, team. Another important job taken care of. Next on the agenda, some well-earned rest and relaxation. Yes. If the Tenryou Commission truly is as busy with preparations as Toma claims, then some rest would be a welcome change of pace. And with the extra time, there are some other matters I wish to attend to. Let's all take some much-needed time off. After a few days' rest, we'll reconvene at the Komori Tea House and discuss our next operation. Downtime is hard to come by these days, so be sure to make the most of it. I'll tidy things up here and start thinking about our ingredients for our next round. Okay. There's gonna be a रुको भाई रुको चाइल्ड Sure, why not? We should play again now that everyone चाइल्ड knows the का rules. I'll see you all later. चाइल्ड का खड़ा होने का और टोमा का खड़ा होने का कटिंग सेम है चेहरा भी सेम है क्या बोल रहे हो भाई What are you saying? देखो क्या लिख रहे क्या बोल रहे हो अरे हद हो गई मतलब हद हो गई यार कुछ भी लिखते हो यार कुछ भी इस कमेंट को ना कल बोलना भाई कल बोलना जब मैं 8 बजे स्ट्रीमिंग स्टार्ट करूंगा ना
ये कमेंट दोबारा बोलना, पिन कर दूंगा मैं इसको। जो बंदा आएगा ना उसको बोलूंगा कि भाई इसका मतलब समझा मुझे, ये बंदा क्या कह रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अति उत्तम सर, अति उत्तम। कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? टेस्ट कर ली क्या सर जी आपने? कर रहा हूँ भाई, अभी बीच में हूँ। मैडलेट ब्रो, ये ऊपर ना एक डेबू प्लेस का मैसेज है, आप उसको पढ़ के एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हाट ही वांट टू से। मैं उसका जैसे कमेंट पढ़ा हंसना स्टार्ट। जब कैस्ट हो जाए तो मेरे को मैसेज कर देना डीसीपी के, क्या हुआ, व्हाट हैपन। अभी कर देता हूँ मैसेज तो मैं कतई आंखों से धुआं निकल गया। मेरी भी निकल गया आंखों से धुआं। हाँ कर दिया मैसेज भाई मैंने, बताओ मैंने ये क्या पढ़ लिया? देबू भाई कौन से मूड में हो? Something has come up, and I would like to request your assistance. But you ought not be nervous. This is not coming from the Yashiro Commission or the Kamisato clan. It is my own individual request. Individual request? You mean personal stuff? Correct. It concerns my mother. क्या This करा, may seem a little क्या करा sad, होने का डेबू? but in my view, you are the only person I can entrust this to. A few days ago, I was sorting through some old family belongings when I found a notebook that belonged to my mother. She wrote about all kinds of things, उनका मतलब mostly of little स्टैंडिंग होने का है, consequence. maybe. But what drew my attention was a name. It is one that I have never heard before, बेडू so की the fact कपीली that she शायद, mentions it अरे so frequently, 2-5 it पर मैंने makes it खुशी difficult में for me बेडू to की ignore. दारू पी ली। Probably your mom's best buddy, right? Never. बेडू की दारू पी And ली, although nice. my mother and father passed away many years ago, both my brother and I are familiar with the vast majority of their acquaintances. So, I am very curious about this mysterious individual. I would very much like to meet them. According to the notebook, their name is Tsubaki. This seems to have been someone very important to my mother. Someone with a lot of personality, who... Paimon thinks it sounds like a girl's name. That's what I thought too. So what do you want us to do? Do you need us to find her for you? No. Her address is given in the notebook. We can head straight there. I wanted you to assist me with the preparation of greeting gifts. Please keep everything I have told you in strict confidence. The proper course of action would be to involve my brother in Exactly. That, and you are also a kind, well-mannered person with a genuine concern for other... You can count on us! We've done greeting gifts before, so we should be able to help. In terms of payment, just treat us to some delicious food and we'll be more than happy. Wonderful! In fact, I was hoping to take this opportunity to show you both around. If you don't mind, of course. Oh, we don't mind. We don't mind at all. Do we? Thank you kindly. Shall we head off then? Ogura Alright, sounds great. ये तो इसकी स्टोरी स्टार्ट होगी मुझे लग रहा है, आई थिंक सो। हाँ अब ये क्या हो गया, अब ये कह रहे हैं कि कंप्लीट अदर क्वेस्ट, ये करने पड़ेंगे पहले मुझे, मतलब धोखा है ये तो। चलो ठीक है, डन है भाई, हम खुश हैं भाई लोग। करायो अयाका के साथ हाँ जड़ी बूटी मिल गई है। मैसेज डिलीट कर दिया, मैसेज डिलीट कर दिया। चलो कट लेते हैं अब हम, पतली कड़ी से निकलते हैं। बाय बाय भी है, बाय बाय भी है, गुड नाइट भी है, टाटा भी है, नमस्ते भी है, सलाम भी है, प्रणाम भी है, सत श्री अकाल भी है, बाय बाय सब।
If you ever want to trade tactics, I'm always ready. अरे वो तो डन हो गया भाई, कर दिया बस मैंने, मैं तो बंद करके निकलने लगा हूँ। मैड लैड ब्रो, गोइंग नाउ। कल मिलेंगे यार, ठीक है। आज तो फिर भी 4 घंटे की स्ट्रीम कर ली मैंने। हाँ, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग डैट कि 4 घंटे लगेंगे, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 4 घंटे से मैं इसको खेल के हटाऊँ और 4 घंटे में ये कंप्लीट हुआ नहीं क्वेस्ट। फाइन ना। समझ गए, हम तो समझ गए, भावनाओं को समझ गया मैं तुम्हारी के। 1700 प्रेमो जेम्स से मेरे पास इस अकाउंट में, देखूंगा मैं ओवरऑल कितने बनते हैं हम। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।